I mean, Death Wolves are in a great position in day one. You know what I'm saying? And at the end of the day, all that matters is that if you make it into that top 8. So they're definitely in a great position coming today. But I do like to see that, though, right? I mean, honestly, you know, it's a great mindset to come into. Or, you know, when you look at it and you're like, oh, it's a terrible day. Because if they have that thought process coming in, then that means that their expectations is to be in nothing less than first place, right? And if you have that main event coming up where that big money's on the line, that is the mindset you have to have. So I'll kind of backtrack a little bit and I'll say, you know what? Okay, Death Wolves, right? Let's see what you can do today. And maybe you might be able to even make a miracle happen and try to pass up the Falcons. But good luck with that, because those guys are high in the sky. And I know you guys are a bunch of wolves and work together, but still, them Falcons, they're no joke. That's right. And you know what, DK, I want to get your thoughts. Do you think Falcons, are we going to get the exact same Falcons, or possibly an even more aggressive Falcons here today, considering that they know exactly at this point they just gotta have to do a little bit more points and they're going to qualify if they haven't already qualified to main event? How are we feeling in regards to Team Falcons and how they're going to perform today? I think we are going to be seeing an even more insane Team Falcons coming.
getting up to a little bit of shenanigans, trying to figure out who is who. But we were also talking about what the Team Falcons are going to be looking to do here today. Now, what I was trying to get to is that Team Falcons came into day one, and we would say they did so slightly blind, right? Because you know, they didn't quite know what the partnership teams were going to be bringing on through. But now they've had the opportunity to do their homework, to do those VOD reviews. So I think, honestly, here, guys, I mean, they are going to be coming in so hot right off of the bat here. Makes total sense. I will ask you this, Seven, right? Yeah, we know that they can have the potential to pop off. They have the points to do so. My question is this, right? Instead of trying to go and just, you know, hunt down first place, because at the end of the day, you know, in these prelims, all that matters is top 8. Do you think instead they'll decide to set their little falcon eyes on some of those teams trying to barely make that cutoff? I love that I already knew what you were gonna ask me, and I love that I had already said yes, because I'm hoping that's gonna be the case. I mean, if this team can find themselves in a situation where they don't have to worry about the likes of Influence Rage, they don't want to have to worry about Vampire Esports, and you can make their life a little bit more difficult, and you have such a buffer already, nobody is gonna remember if you ended up first place in the prelims. But you know what, they might end up remembering who's gonna end up winning this first map in Sandhawk for day 3, because we're gonna be hopping in, we're gonna be dropping in hot, and with this plane path, we might end up with some hot drops here, DK. Oh, yes, sir. Yes, sir. I'm curious to see where the Vampires are going to be looking to get themselves situated, because yesterday we did see them coming in clutch with that winner chicken dinner out of the gate. But, well, as we know, with Group A now joining in on the party here, it is going to be a pretty hot and spicy day. Hot drops would be nice, potentially in this first game, but let's maybe leave it just there, right? Just the first match. So, yeah, Seven will have to wait and see. Yeah, and then one thing, talking about hot drops, guess who we're also looking at as we're taking a look at the plane path and where the circle is going to pop up. Enigma Galaxy, this is a team that I'm hoping, and a lot of their fans and people from the regions is hoping that they are not going to be hot dropping today, that they're going to be looking to set themselves up, put up a much better performance. And talking about hot drop, well, we're going to get one. We're going to be able to get Team Falcons and none other than Influence Rage. And I was just talking about them and seeing if they were going to be willing to fight each other. We just might get that answer real quick. Well, this is where we are going to be having a beautiful bit of a showdown come through here. I love this position coming through from Falcons, holding on to Lobster. As you can see, Influence, I mean, they're not going to let that one slide. It's going to be top, though. Beautiful jump play, kicking us off with a little bit of action right out of the gate. So that is the first confirmation in Law. Also trying to see if they can maybe find a bit of an opening, bit of an angle here. But Seven, I love this, right? The team's just showing up. They know what's at stake here. They definitely know what's at stake. I mean, one team that needs those points, it's going to be Influence Rage. Team Falcons going to be able to relax a little bit, even though they're not going to be going to, because they are Team Falcons. We saw how they reacted when they ended up winning, and right now Top is trying to figure out where some of these players are from Influence Rage. The shotguns are going to be out. The one thing you got to keep in mind is some of these players might not be able to loot yet, as we do have another fight going to be ensuing. Team Queso going up against Foot. Those two teams definitely need the points as well if they even want to be able to challenge on the top 8. Oh my goodness, he tried to do the quick 180, get the other player that was pushing him, but he wasn't able to, and now Karos is going to try to back off from this fight and stay alive a little bit longer. I think that's a very wise call to make here for the side of Foot, seeing that they're also widespread across the map, right? You don't really have that fortification, that backup to really show up alongside the players there from Team Queso. So hopefully that is going to be the approach, or maybe Keros is just going to be waiting for a little bit of that backup. Speaking about backup, though, we are going to be needing a little bit of assistance here between Influence and Falcons. Both squads are just getting themselves ready for a little bit of a push, a little bit of a play. No one really taking that first plunge just yet, trying to assess the situation here. But in the meanwhile, just a little bit further down towards the south, we got 9Z getting into a very hot and sticky situation. 9C going up against Regnum Karia, and Regnum Karia, I mean, there's so many teams that need to have a good game here. We always try to give some teams a map off. You know what? That was in their first day. That was on their first day. As 9C now is going to be finishing off those players there from Regnum Karia, and Regnum Karia definitely a team that needed those extra points. They're currently 17th place with 31 points. If they want to try to make it in the top 8,
I mean, it's going to be a struggle. Now we're going to be getting the fight. Influence, Rage, a team that needs the points. It's going to get absolutely demolished by Team Falcons. Team Falcons making that look so easy and so good that every single player on that team ended up getting an elimination. And that's the beautiful thing about Team Falcons. Anybody can take care of business if they get put on the spot. Yes, sir. I mean, I almost want to say they're in it to win it, but let's see how this one is going to play out for them, as we do have a little bit of pressure now starting to build up in towards that more centered region of the zone. Regnum Karia, so far having good pacing, but an interesting thing that I've noticed here, aside from what we just saw with the Falcons there, a lot of these confrontations that we are looking at is essentially teams that are sitting right next to each other on the leaderboard, right? Team Kesar, Foot, next, they are side by side, and we did see the same thing also coming through between Regnum Karia and 9Z. But let's see who's going to be the one to reign supreme here, as it is going to be Kairos, just keeping a very watchful eye down on that bridge. Yeah, and with the points, we're talking about the top 8, which are going to be going to the main event. I was guessing that it's going to be anywhere between 75 to 80 points. That's going to be the cutoff. And you can see Influence, Rage at the moment nowhere near that. Luckily for them, I mean, we still have 5 matches, but I'm pretty sure they would have loved to have those 4 points out of Team Falcons. And also, how is that going to start playing on the mental of Influence, Rage? And also, how is that going to start playing towards Team Falcons, knowing that they just took care of business against Influence, Rage? Now we might see a little bit more of what we were talking about earlier, DK, of maybe Team Falcons saying, okay, I mean, we can definitely beat these teams. We know we can beat this team. We just showed that we can beat these teams. How about we try to maybe cut off the rotations? How about we try to surprise some of these teams that need the points and make their life just a little bit harder? Yeah, but the scary thing here, Seven, is that once Falcons get that momentum, they become quite a force, right? So if teams want to maybe solidify some hope for themselves, we kind of maybe have to see, you know, a bit of a push coming in on potentially maybe the Falcons, but I don't think the Falcons are going to let any of that slide or even pass them by. In the meanwhile, we're looking at a little bit of an angle now coming through here between All Gaming, or All Glory rather, all the way down towards that far southern side. Horaa also coming through with a little bit of that connection. I mean, this is also going to be a very important play now for Horaa, right? They still want to try and climb up that leaderboard. As we can already see, they are situated all the way in 17th place with those 31 points right alongside Regnum Karia. But now, Mafia Ninja, is going to be taking a little bit of damage. And Horaa Esports tries to do the push. It's going to start backfiring as All Glory Gaming are trying to fend them off. They are able to knock one player. They need to be careful too, as they could possibly end up getting third party. And here we go with the push. Guapo is going to be trying to find an angle. He's going to be trying to confirm this into an elimination. He's going to be able to spot one player. Can he hit those shots? He's going to be able to knock him. He had a DBS, so he needs to be careful. He needs to watch out. Here comes Melger trying to get that off angle. It's going to come down right now to a 2v1, confirming those elimination points. And here come Cardi from All Glory Gaming, trying to back up his player. Only 2 players alive from each team. Can they finish off this fight, or are they going to be trying to just back off? And Cardi is going for the hunt. He knows that that player's running, and meanwhile, Guapo is currently getting revived. This is looking good here for All Glory Gaming. I mean, it could definitely give All Glory Gaming a really good footing here if they can get their player back up on their feet. But Horaa still going to be trying to do the business here. You can see Sky looking for the angles. And this is now where things become a little bit more challenging, because they're also got to consider at the same time, how are they going to rotate themselves back in towards the zone? Unfortunately, Quarry does seem to be quite open for the taking at this point, as the blue zone is going to be picking up Fran in the process. Guapo back on their feet. Things starting to look a little bit better here, but All Glory not out of the woods just yet. Yeah, All Glory's not. I mean, even though they did ended up winning that fight, in a way, they still ended up losing one player. And this was a team that only got 3 points yesterday after 3 matches. An absolutely awful performance to not even keep going is even be more toxic from my side. So that's a team that's definitely trying to make a change here. It is going to be their last day. It could possibly be their last day in the PMGO, which, I mean, if they don't end up popping off like Team Falcons did in day 1, which is going to be very unlikely from a team that ended up getting 3 points, they're going to be sent home. Regnan Karia only having 2 players now. They're going to be looking over towards 9C, seeing if they could possibly spot somebody. And with Team Falcons, you know what? We were talking about
everything in regards to them wanting to hot drop or maybe hunting down some of the teams on their rotations too. I'm pretty sure a lot of the teams currently in Group B that were just able to do barely enough, and I'm thinking right off the top of my mind, Team Liquid, right? They were able to end up with 71 points at the start of the day. They're currently in 5th place. My guesstimate is going to be 75 to 80 points is going to be the cutoff. So if that actually stays, Team Liquid wouldn't be able to make it. But what if Team Falcons starts doing so well and gets so many points? And this was the conversation that I was having with Hajux too, that they actually stop some teams from getting those points that they need, and it kind of helps out some of the teams from Group B. I mean, they definitely have the capability to pull off a maneuver like that, right? And I think it's going to be interesting to see how they plan to play out this whole situation here. But, I mean, you were talking about All Glory as well, right? If they have a good day, you know, things could definitely work out for them. But they also have a lot of power because they find themselves in a very similar situation. I mean, they can also control who gains points and who doesn't. If they go on the hunt, some magic could start to happen there. So yeah, I think there is going to be a lot of interesting things happening out on the battlefield here today. Speaking about interesting though, Enigma Galaxy also now starting to make their way on up, and they've decided to not go for the hot seat today, right? They want to play a little bit more of a calculated approach, not going to be rubbing shoulders with other teams unnecessarily, I would say. Yeah, they're not going to be looking to do that at all. I would like to see how Enigma Galaxy is going to be performing whenever they do have to push out of a set spot that they are. That has been their biggest weakness last year. I kind of glimpse of it on day one as well, and this team is just not performing that well in regards to that. Now, Furia, a team that's going to be looking to contest there on the top 8, looking down on Team Queso. Team Queso from yesterday from Group C, not having one of the best performances ever. They didn't even end up one time in a top 4 situation. They were able to finish in the top 5, but only with 3 elims. So it's not going to be enough. We need to see a little bit more proactiveness, a little bit more urgency out of all these teams that are wanting to do something. But when it comes down to Sandhawk, it's easier said than done because there's just so much madness. Look how close these teams are going to be. And if you do get into a fight, a lot of the stuff that we've been seeing on the first 2 days is you're gonna more than likely get third party. So if you do get into a fight, try to finish it as quickly as possible. Yeah, you're definitely going to have to try and do it as efficiently as you can. But I'm going to be looking up on towards the Vampires there as well, that we did see sitting up towards the northern side of Zone. It does seem like they are maybe cooking up a little bit of something there, right? They've got a little bit of a setup. I think it's also one of those teams that we are really expecting to start popping off here today. But I think a lot of the focus is also then going to be over on towards the Death Wolves, right? As we did see Guazzo saying that they had a bad day yesterday. So, I mean, if they considered yesterday a bad day, I want to see what a good day looks like. Because, I mean, they were playing quite an aggressive bit of action, bit of gameplay, as we saw coming through from those qualifiers. And then, of course, yesterday, they got that first and second place positioning. Yeah, and I wonder if they're maybe talking about possibly being a little bit more aggressive, getting those extra eliminations, or what it was. Because, as you mentioned, it was a fairly good day. It wasn't nothing along the lines of what Falcons was able to do in day 1. But not bad with their position in first place one time. They ended up with 6 eliminations. They ended up with the second place as well at one point in Erengo with the 5 eliminations. But then they have some matches, and these are the ones that I think they're maybe reflecting on. The first Sandhawk, they ended up in 11th place with only 2 elims. And then on the first Erengel, 10th place with 3 elims. So the good thing for this team is that they were able to get points every single match. The inconsistency wasn't as crazy. So we'll have to wait and see if they are going to be making that move and trying to become a lot better, as we do see Enigma Galaxy passing by Falcons, and they're going to be trying to crash Falcons. And guess what? One of the best players there from Enigma Galaxy, Coops, gets knocked, and I doubt he's going to be able to get picked up here, as now some of his other teammates are taking a fight with Team Queso and getting knocked as well. But Steven, I think this is what's so crazy about what we have currently happening in the zone, right? We've got such a concentration of teams all just huddled over on towards this western side of the zone. So a very bold decision being made there by Enigma, trying to get themselves situated a little bit further on forward. They do end up paying the price for that, as they get sent away quite early on.
essentially just giving eliminations to a few of the other teams here. But now looking down onto Regnum Karya that we had over in that bowl there, it is going to be a pretty sticky play to get themselves out of that and into a good angle. Falcons, on the other hand, though, I mean, they just starting to spread out here in boot camp. They are going to be having to spread out. I mean, the only problem here with Team Falcons is they need to be careful because Vampire Esports does have the high ground, does have a lot of area to work with, and we saw what Vampire Esports was able to do yesterday in this exact same position. Not the exact same place on the map, but the exact same position of them being able to control such a big area within the final circles. As we're looking there at the map feed, Vampire Esports is going to be looking great. They have the high ground. They're going to be able to affect a lot of fights, and they're going to be looking to send a bit of a statement here at the start of the day because a lot of people, including myself, got catfish yesterday. They started the day super hot. Then we didn't see them at all in the next 4 matches, and then on the last day, Vampire Esports was like, "Oh yeah, guys, we're still here, 3rd place, 9 elims." We want to start seeing more consistency out of this team. We want to see that PMWI champion status, the performances that they have showed in the past. Well, let's hope that that is exactly what we'll be looking at right here. In the meanwhile, Falcons, Furia getting into a little bit of a hot debate. I mean, I like that setup. Vampires just over onto the edge. And as you've said, right, they've got the elevation, they've got the high ground. But now with that zone shift that we saw coming in, that places them in smack dab center zone. So a very controlling position that they have possession of there. So let's see what the rest of the teams are going to be doing. Na'Vi now taking the plunge, just rushing straight on forward. And I think Na'Vi realizes that there is some Team Falcon players right here. Now they do, as there was a shot there by Action, a little bit of trigger discipline. But guess what? Action's going to be saying, bring it my way. It was all a plan. He's going to be able to knock one player. The only problem is that he's not going to have anybody to back him up. And Action is going to get eliminated. And the crazy part there by Na'Vi, what they were able to do is they were trying to do a bit of a split. It ended up backfiring. 2 of their players got knocked. I think only 1 got eliminated. And they're trying to see if they could possibly revive this player. As I see, is going to try to make a push and see if somehow they can finish this players from Na'Vi. I mean, what's quite interesting to see is that even though we find Falcons now getting quite aggressive onto the side of Na'Vi, none of the teams in the vicinity are looking to capitalize on what is at hand here. So it's going to be a tricky play once they make it out of this. As we move just a little bit over towards the western side, you can see, of course, now Furia just jumping at the opportunity. Horaa getting spotted out in the open. But we also then have the Devils trying to get a little bit of the action going here. But Furia just having such amazing reach all across the way. And we also then say goodbye to 9Z. And with this here, Furia playing it out perfectly. You were talking about some of the teams that could affect that fight between Na'Vi and Falcons. Horaa gets eliminated. Meanwhile, Furia, instead of wanting to third-party the fight between Team Falcons and Na'Vi, they decided to back off and just play their own game. Try to get those angles. Try to focus a little bit more on getting that scouting done. They're able to do that, and they're able to pick some of the fights apart from the other teams. And here we go. The circle's going to be closing in. Look at Vampire Esports currently holding up so much ground, and now a lot of these teams that were in boot camp are going to have to push up. A lot of the teams that are towards the east of the map, which is a bunch, are not inside the circle. So that's going to be absolute mayhem and madness whenever they do start making those rotations as Rules of War, trying to get those extra points. Team Kesto just lurking by. Oh, come on. And of course, who also is lurking in the shadows here is going to be Regnum Karya. Still just holding on to those rice fields. But there we go. The play coming through, though. Solke with an effortless hit right over in towards Rivas. So, I mean, you got to commend the plays. The angles, just capitalizing on the opportunities. But now comes the tough part, right? Because, as you said, the zone, it's moved up. A lot of teams still need to get themselves situated, and there's not going to be a lot of space really to work with here. We do see the Deathwolves also now starting to hit a few shots home as they find the opportunity over across the way onto the side here of Furia. I think Guazo is going to have a pretty tough time rotating out of that little shack over there. It will, but he might just be able to do it. And with Solke, the way he was able to get that angle there, we're talking about Regnum Karya. It was possibly going to be them. Nope, it ended up being Solke from so far away. But that's good. That's what we want to see out of this team. Is not just be too passive if you are holding a compound. Look ahead, try to be proactive, try to clear your area. And if you're able to get any points here, make sure you get them, because it could come down to 1 point. You guys saw it during the qualifier finals.
It came down to the last place team that could qualify here ended up making it just by 1 point, beating Inco Gaming. Here we go. Team Queso now at 4 points, all via eliminations to MB. I think he ended up knocking that player there from Random Kari, and I'm wondering if he's going to be able to notice it and maybe convert that into an Elim before it gets stolen. Inco Gaming now trying to make a push. This was a team that I was talking about being able to qualify to the prelims by just 1 point. They're going to try not to make it so stressful for them. Nurse is going to get pushed. Here comes the push. He's going to be switched over to the shotgun. He's going to make that look very easy. And they're going to try to confirm that he needs to be careful because he's getting pushed by another player from Navi. And he gets knocked. And there's going to be nobody able to back him up. Now Icy actually making the push and trying to get to that Navi player before he heals up. Navi player is going to be able to get the heals off. But this fight's still going to continue, DK. I love this play from Psych. Coming in is like, oh, you said shotties? I can do that. Let's see how this show goes. And now it's going to be the S12K versus DBS. Icy and Psych trying to set all their differences here. Who's going to be the one to survive the play, though? Oh, Navi, come on. You can clutch a little bit of something here. They're already sitting on those 4 eliminations. Falcons, though, on a very comfortable 7. Let's see how this one goes. Oh, almost a no-look tap coming through from Icy, as they do send Navi on their merry way. Vampires, in the meanwhile, they now going to be looking to lock down the zone as Inco tried to push on forward all the way from that sudden side. Inco is trying to make that push. The good thing about Vampire Esports, they were holding up so much ground that they could end up surprising Inco Gaming here with some of the off angles, and that's exactly what ended up happening, having to force Inco Gaming to just push back down. Vitali being the only player alive now at this point, and look at that. Vampire Esports is looking great right now with the positioning that they're holding. They're able to see anybody that gets close to them. They're going to be able to make sure they knock them and confirm that into an elimination point. They're currently sitting at 4 points for themselves. They're not going to be mad at that, as we do see the play zone starting to take some of the other players. I see the only player alive from Team Falcons, and Team Falcons, even though they might not be able to win this match, they do end up with 8 elimination points. Oh, I mean, 7 at this point, it is going to be so dang challenging to dethrone this position coming through from Vampires. भाई जल्दी से लाइक कर दो यार, जो जो भी स्ट्रीम पर आ रहे हैं लाइक कर दो यार ना। इंशाल्लाह आफ्टर इफ्तारी कैमरा ऑन करते हैं। Both teams, they've had their plays, they've had some amazing performances. Each of them now going to be looking to secure. कोई Vampire का comeback day आज। 3v4. I think 7 at this point, it is looking pretty good on the Vampire Esports side. It is going to be looking good, and Death Wolves is allowing Vampire Esports to get way too close here. I thought they were going to be trying to get some off angles. I thought they were going to be trying to surprise some of the players, and this player right here, Wezo, might be able to actually do it, as he's going to be taking some shots there to Tony K, trying to confirm that elimination. He's not going to be able to, but they still have, Vampire Esports still has 1 player on top of the mountain, on top of that hill, trying to get those off angles, and I think that's what Death Wolves was worried about. They are going to be able to knock that player that we mentioned. Stone's going to be now pushing in, and I think they might be able to get nice one. They're not going to be able to. Newsy gets knocked as well. It went from looking so well to Vampire Esports that now they're going to be trading back and forth, and guess what? It's going to turn into a 2v1 that's obscure from Dead Wolves, is the only player alive, and you have Schweppes there at the top trying to see if he can possibly get those shots, and guess what? Nobody's going to doubt that. Let's go for a 20 likes, boys. Go back-to-back wins in San Hakan, back-to-back days, ladies and gentlemen. We just need to start seeing this out of Vampire Esports in some of the other maps, in Erangel, in Miramar, but that is how you want to start the day. Vampire Esports, and you've said it, 7, right? Now they got to translate the success that they've shown on Sanhok into the other 2 maps, because it's going to be of the utmost importance to them here. Yeah, and the thing is that as surprised as we are with Vampire Esports as their lackluster performance yesterday, they did end up with that chicken dinner. They were able to still put up 38 points. And if the guesstimate is going to be right with 75 and 80 points,
this team just needs to keep on doing what they're doing, because as much as we are judging them, as much as all the viewers are judging them, it is going to be for top 8 in this situation in the prelims. It's not about who's going to end up being in the first place. The prize pool, as Hajux were mentioning, is not going to be different. You just have to make it to top 8, and if they continue doing this, it's going to be just enough to actually get into top 8. Yeah, that's going to be the goal. That's going to be the aim of the day. And as we saw coming into this lobby, there was only one team secured in the top 8, right? Falcons, they were the only crew holding on to that. So the pressure is on for everybody else playing here today to secure that seat. And I mean, as we've seen, the teams, they are ready for action. They are ready for pressure. And Falcons action just bringing in so much of that right here over in the warehouse. Oh boy, Jukes, how are you feeling after that Sandhawk? Oh. Was it everything that you were expecting and some more? I mean, I saw some things I was hoping to see. I saw some things that absolutely shocked me. The first thing is, you know, off the rip, Influence Rage dropping onto the Falcons. What are they thinking? That I could not believe it. I could not believe it. Why would you even want to mess with the team who could literally decide your tournament life? You know what I'm saying? It makes no sense to me. If they win, then they could literally just anger the Falcons, and Falcons can go after them for the rest of the tournament and still make it into the top 8. And if they lose, then you just fed the Falcons and crushed yourself from another game that you desperately needed points from. So that shocked me off the rip. And then you have Vampire coming out with 9 eliminations and the chicken dinner. What more could you ask for? Now, we saw them dominate, like you mentioned, in Sandhawk yesterday, but that game, though, who knows? That could just be enough to already rocket launch them into that top 8. We'll have to see if they're going to be able to hold on, though, here, 7. It's the same pattern that we're starting to see with Vampire Esports too. If they're able to get in just such a great position, this team is just so well at being able to hold all those angles. Oh man, it's so crazy. When these guys get hot, they are just really difficult to stop. And the first chicken winner in the hands of the Vampire Esports. And I'm here with the coach, and we are going to talk about this last match. Okay, thank you so much for being here. And I want to know, instead to hunt out the top, are you guys focus on you guys focus to make the cut among the top 8, maybe set a new strategy for today, working on rotations, because you got the first chicken dinner, but you still start the day in the 13th position? So honestly, today we just focus only on the top 8 first, because you know on this tournament it's very hard to compete. So many team is good, and so many things like a circle is very shrink, and it's so hard. So today I think it's depend on the game. So we try to focus on sometimes playing is, sometimes it's playing on the middle, because you have to adapt in game. Yeah. So I hope my player doing well and we get the top 8 today. Awesome. And people talk a lot about one of your players, who is Tony K. He's probably a star of the team. And do you think it's too early to say, but do you think he can run to be the MVP for PMGO? That's appreciate that, but I think he will do his best, because yeah, MVP, anyone want the MVP, but I think if we can do like more teamwork than the individual work, I think it's more better. So I hope Tony K will get the MVP, or maybe someone else in my team. Let's see. Thank you so much, Sir Tanek, and that's it. We will see you guys again in the next match. Always good to hear Sir Tanny's opinion, man. One of the legendary coaches in esports. What do you think about that interview, 7? It ain't probably. All right, Tony K is definitely the star for Vampire Esports, and I do love what Sir Tanny was able to say there. They were trying to focus a little bit more towards the center of the circle, and that's exactly what ended up happening here in this Sandhawk. How is that going to translate, though, whenever we start going to Erangel? Yesterday, they didn't have the best performances in Erangel. They were able to kind of save it a little bit on the last match of Miramar, but I do want to start seeing that Vampire Esports. I want to start seeing a bit more of consistency, not just some spikes at the
teams. Yeah. And I'm sure some of the other teams like Influence Rage, after having that awful performance there in that first Sandhawk, they're going to be looking to bounce back. 100%. Well, guys, go ahead and check out the anniversary crate that just came out. You have until the end of the month to try to pick up some of the skins that you guys have been hunting down for a long time. I'm talking about the full M4, a whole bunch of other bad boys, and it's only 30 UC for your first draw. So definitely go check that out. Also, of course, we have to give a big thank you to none other than the Realme 12 Pro Plus. It elevates your photography experience with 120x super zoom and performance in games. Go check it out today. How to be a portrait master. One, two, three, yeah! Bounce in the streets, I'm a boss till I call. Bounce in the beats, I'm a boss till I fall. I'm a boss on the beat, I'm a boss, spit it raw. I'm a boss, keep it G, and I walk in the talk. I'm a boss. Welcome back, guys. Well, you know what? The next game is about to get started here. I am so excited for it as we're going to be heading into Erangel here, Seven. Yeah, we're going to be heading into Erangel. Who's it going to be, man? You know what? I want to see Enigma Galaxy. Enigma Galaxy, show us what you got, because this path right here, DK, is going to be perfect for them. The question is going to come down, is anybody going to be challenging them when we go to Pochinki? I think that is going to be a very interesting question to see the answer to, because I don't know what the answer is, whether or not anyone is going to be looking to challenge them in Pochinki. But, I mean, yeah, Enigma Galaxy, we want to see that step up, because as we've seen so far already, right, the last time we had them in the first irregular of the day, they ended in 13th place with that one Elam, but we know what happened there, so we won't talk too much on that. Let's see whether or not the teams are going to be looking to change things up. So far, it does seem like we are having a very regular kind of drop off, right? Teams going to either side of those flight paths, but an interesting one there from Falcons, looking to get their play started all the way down over in towards Nova Red Noya, and then of course, well, the Death Wolves, right? Also looking to potentially maybe build up a bit of momentum depending on where that zone is going to situate itself. Yeah, and I think with Falcons, I wonder if they were hoping that Navi was going to be dropping over there too. There was nowhere near him, and there we go. We get the first circle. It's going to be towards the main island all the way to the west. So a lot of teams going to be able to rotate, and I wonder who's going to be rotating quickly. You're mentioning Death Wolves. Death Wolves is going to have to cross some bridges here, and I'm starting to see Team Queso staying within that west bridge. Could we end up seeing some kind of bridge camp? We'll have to wait and find out as the game does continue on. We're talking about Enigma Galaxy. I think the main reason why I want to see Enigma Galaxy and what they're able to do if they're not getting hot drop in Pochinki is because they're going to be able to play a bit more of their style. They're going to be able to do a little bit more scouting instead of doing what they were doing last time, which was just getting out of a fight, not having that many heals, and going in absolutely blind in their rotations. And with that extra time, we do expect them to do a lot more stuff. With the extra scouting, we do expect them to find much, much better positions. I mean, so far things are looking pretty good, especially over onto the side there of Enigma Galaxy. They are uncontested, so no team really to worry about within that Pochinki region. We do see Fireflux just going to be holding a little bit further up towards the north, almost up in towards Rozog. Regnum Karya also having a decent bit of a spread here, but an interesting rotation coming through here from Inco. I mean, they saw Everest is open, then they were like, you know what, we don't have loot, we don't have weapons, we've got nothing. Oh, we're going to try and claim Everest. And they're going to be going for it. Remember what happened last time when Team Falcons was able to take advantage of that Everest finish? Boy, it worked out wonders for them as they were just clearing teams left and right, and it was one of their biggest wins. One of the biggest wins that we have actually seen in this tournament so far in the prelims. I think they ended up with something along the lines of like 18 elims. And here we go. This is just... I'm not used to this. Pinch me, DK. Am I dreaming right now? Am I seeing this right? Is this Enigma Galaxy in Pochinki? But there's no hot drops. Obviously, DX is not going to be here because they're in Group B, which it's kind of nice for them. But there's no other team wanting to hot drop this. I'm liking it. Okay, let's see what can happen here with Enigma Galaxy.
I mean, I'm squinting my eyes to just make sure that what I saw was 100%, and I mean, it turns out that's true, right? It's just Nigma there with the whole entire Pachinki for themselves. Yeah, it's like you were saying, right? This gives them the opportunity now to play strategy as opposed to, you know, having to contest for possession of Pachinki itself. But the rest of the teams, I'm still going to be looking at what the rotations will be. I mean, we were talking about the Death Wolves a little bit earlier on. They are most likely, I think, going to be opting for that Western Bridge, and Team Queso, they're looking to get themselves set up there, so there could be a little bit of head bumping going through as the teams start to push on forward, but it doesn't seem like Death Wolves are going to be looking to make any of those plays just yet. And earlier we saw Inko and Inko rotating over atop of the lovely Everest there, but it seems like they've also then decided to move down in towards Georgia Ball, right? We got Furia kind of sharing that position with them, and speaking about sharing is caring all the way over in Yasnaya. Yeah, we had Horaa Esports there against Influence Rich, and a team that wants to get those extra points, especially after getting a little bit embarrassed there with what Team Falcons was able to do to them in bootcamp on that first match of San Juan. Here we go. The battles of Everest. Are they going to be friendly? Are they going to be having some kind of peace treaty here for a while until they are having to absolutely fight, or going to be they trying to establish, you know what, this is our side. You do not even try to peek our way. Do not try to do anything silly, because we'll come after you. Regnum Karya, a team that needs those points, a team that before this match started, they were in, let me just double check, 15th place with 37 points. So for Regnum Karya, honestly, to start having even a chance with the top 8, with how some of the other teams might end up performing, I need to start seeing a minimum out of 10 points every single match out of Regnum Karya. Yeah, and this is where they need to be careful, because as we can see also Furia, they are just a few slots above them, sitting on 44 points. So, I mean, if they're not careful, they could definitely be handing them a few points on a silver platter. Speaking about platters though, 9Z are going to be rolling on up, coming in hot as they just fly on through into the zone. Not taking any names, any questions. They just going to be pushing. Now, this is where I'm curious as to where they're going to be rotating, right? Are they going to be pulling into these compounds over here that we can see just up ahead of them? Or are they maybe going to be opting for position a little bit further up in towards Headshot Hills? Yeah, we'll have to wait and see what they're going to end up deciding. And I'm looking to also see what Nigma Galaxy is going to be doing here, because they're taking a little bit too long there in Pachinki. They haven't really been able to readjust. Obviously, the circle is still within this area, but you might have players like Foot being able to try to sneak up on them. There we go. Fireflux being able to catch somebody there from Foot. He's going to be able to knock him, and he's going to be looking to confirm that into an elimination point. And they're going to be forcing Foot to just absolutely back off from this fight, as Doku Machine is trying not to get knocked. He's very low in HP, and that might force some of his other players to come back and try to help him out. He's still taking shots on Fireflux, on Lux. This man just doesn't care if he's 1 HP, as grenades are going to be coming raining down on him. I mean, but this could also be a good opportunity now for Fireflux to secure a few of those points. You can see Sola is trying to reach across the way, see if they can find that last slither of HP. But there we go. It is going to be Lux instead to end the run, as Dokken gets dropped down to their knees. The rest of Foot now gonna have to decide how this play will pan out. We do have 9Z also now stepping up to the plate. So, I mean, it went from a slightly challenging position to an even harder angle to try and cover. Yeah, and even though they're throwing all those smokes, it is such an exposed area, and right now 9C's got everything going for them. You also see Choco trying to get a little bit closer towards this team. The grenades are going to start running down, and if he's able to hit one of these nades, it's going to be massive for that team, as I say it, and it ends up happening. Choco being able to knock somebody, but he needs to be careful. He needs to make sure that he doesn't end up getting knocked, because you know who's going to be one third party this fight. Fireflux. We saw what they were able to do there earlier with some of the players there from Foot, and here comes the push by 9C. Is Rookie gonna be able to clutch this up? He's gonna be able to clutch up at least one player. Fireflux is now getting involved. Fireflux is gonna be able to clear them out, and 9C have to rethink their strategy. They need to rethink if they want to stay here or if they want to back off. Wow, they coming in hot, right? Nobody's even backing off of any opportunities. Now it's going to be Solkay looking to see if they can reach across the way. The nades flying in. Simple is going to be finding a good connection there. Well, not the kind of connection that they were looking for, but, well, it is happening nonetheless. And
does seem like Fireflux now quickly reassessing the whole situation as the zone does take us a little bit further over towards the western side. But Seven, we still see quite a few teams yet to find their way in, and looking at who we already have in zone, things looking pretty sweaty. I mean, I'm looking forward to what the rest of the lobby is going to be bringing in as well. Yeah, the fights that we're getting already, the third parties are happening. Everything is going to be even more amped up here on the final day of prelims. And 9C decided not to back off. I think they were looking for a fight there between Fireflux. Meanwhile, we go back to Everest. Furia is still going to be here. I think Regnum Karya Mata ended up backing off. 9C Choco taking on those shots there to the Fireflux players, trying to help out his teammate Simple to get out of this area to make sure he doesn't end up getting spotted. They don't want to end up losing more players here. It's going to just keep putting them in a bigger disadvantage when we do end up rotating even into the later circles. And 9C just slowing it down a little bit more. This is kind of what we want to see. Vampire Esports, we heard them. They're going to be trying to prioritize the center of the circle, but how are they going to be doing this? Sometimes we see a lot of teams prioritize the center of the circle, and then they try to full send it to the middle without actually doing any scouting. It backfires as Choco ends up getting knocked right there by Soulk. It doesn't end up working out there by 9Cs. They're gonna have to abandon them. And Soulk, once again, Fireflux being able to catch people on rotation, being able to get those eliminations, those easy eliminations. But as I was saying, I'm just intrigued to seeing how Vampire Esports is gonna be playing this, since they are trying to focus into the center of the circle. I mean, for now, I think we're going to have to wait a little bit for that Vampire push to come up into Woodzone, as they are now playing a little bit of a PUBG GTA alongside the players there from Inco all the way up in towards North George. In the meanwhile, Team Kesso, they've moved up in towards Center Zone, so they find themselves in a very hot and contested position. Influence Rage also now starting to pull in. We got Foot also going to be holding it nice and steady, and this is where things just keep getting more and more challenging. Regnum Karya, so we can see them up on that mini-map just over towards northwestern side. There's so much contention up into Center Zone. It's like the teams decided, they were like, you know what, it's the last day, let's just play an insane game of PUBG here today. And I'm all for it, as Furia is going to be getting caught there, trying to go for a vehicle. Risky push, man. Trying to do that without putting down any smoke. 9C currently has 2 players down. You know what? Make that 3 players eliminated, as it's only going to be just one last player there from 9C. Regnum Karya currently getting absolutely cooked, though. Could this player from 9C could scream, clutch up this 1v4? Anything is possible. We've seen it before, but he needs to be careful because there are teams close by. Influence Rage being one of those teams, very close by, trying to third party this fight. 9C not being able to turn that knock into an elimination, but you know who is going to be looking to turn this knocks into eliminations? Influence Rage, as they're doing just that, being able to knock some players from Regnum Karya. And I wouldn't be surprised if right now we see Influence Rage just full sending it to these teams and making sure that they collect those extra points. I mean, they're cooking, they're getting ready for a pretty crazy play. It does seem like, well, instead of pushing up, they were actually just trying to alleviate some pressure, so they have a much more comfortable rotation up in towards that zone, but they are just playing a little bit of leapfrog here, trying to get themselves just ahead of the way of Regnum Karya. As you can see, still quite a few teams yet to push on through. We got Nigma as well as the Falcons now pushing in from that southern side. Navi and the opting, I think, maybe for a much wider rotation in the meanwhile. But Regnum, they've been able to get themselves a steady hold on this compound, right? Furia not going to be contesting them all too much, but instead it is going to be Furia now running over in towards the Death Wolves. Team Kessler also right here alongside them. Everybody's just going to be fighting each other here, as Death Wolves currently has 1 player knocked. They're going to be trying to breach this compound. They're going to be trying to see if they can possibly pick up his teammate, but I don't think they're going to be going for it. He's throwing those Molotovs. He needs to be careful. His teammate's still right there. And on top of that, he's getting nades thrown at him. Nick McGalaxy is going to have to push off there with that sniper tower. And here comes the push. Death Wolf now having a lot more players there to their advantage. Pappy Potro trying to peek, see if he can get an angle. He's going to just barely evade that grenade, but he is going to get spotted. Here comes the other nade from Radboy. He's going to get knocked. Great play there by Death Wolves, as now the numbers are on their advantage. They need to try to make this push, and they need to try to make it quickly, because Navi is on the horizon. Navi is looking to third party this fight, and they're doing just that.
Yeah, the play is in their hand. Now they got to make the magic happen. It's going to be Obscure quickly just trying to reposition here. This could potentially maybe even be a breakaway opportunity, but Coops, though, is going to be met with quite a nade all the way there from the side of Influence. Navi also out in the open trying to pop off at whoever is moving ahead of them. We also did see quite a bit happening down on towards that southern side of the zone, right? We did have a little bit of an altercation between Nick by Galaxy and the players coming through from the side of Falcons. Now, Navi, well, they're done with waiting. They're going to be looking to break down a few doors. And, well, Team Kesor, they're going to be on the receiving end here. Yeah, and if Navi was one of those teams that's trying to be hopeful, trying to show a good performance here, this is what they need to do if they want to make it into the top 8. Because you can see there in the leaderboard to your right-hand side, only 26 points for this team. They need a lot more. The top teams are going to continue to get those points, so it's going to be a lot harder to catch them. But anything is possible here in PUBG Mobile Esports. They got some good points on Death Wolves, and now they're trying to secure this extra points here on Team Queso. And earlier, we did end up seeing Coops getting eliminated as he was trying to make a rotation. That is now the second time that Coops is the first player from his team to get eliminated. Not what you want to see at Enigma Galaxy, considering that he's usually one of the strongest players for that team. We're going to have the circle closing in. Let's see what's going to happen here. And it's going to be none other than straight down to the center, a little bit to the left. A lot of teams are going to be inside, and it's going to come down to who can dominate the most here. We see Navi taking on those shots. This player, Milos from Team Queso, getting so lucky that he's just in the right spot in the corner as the Molotov is not able to touch him. And you have, meanwhile, Navi players running away with fire on their back. I mean, Psych getting psyched down on that one, but up comes Puncher King now looking to follow through a little bit. I mean, some interesting parking that we see here with the vehicles up on the roof. I guess that's free parking all day long, but now let's see whether or not Milos can actually hold on to the defensive here. It's going to be M2MV rather, right there behind them. Push coming in. All right, so the first compounder is clear. They now know where they need to go. Milos trying to just uphold a little bit of the position here, coming through with the DVS. It's going to be Molly's, but it doesn't seem like they found any angles just yet. Navi, though, getting ready to jump. And they have the numbers. They're trying to get the angles here with 6. Are they going to be able to do it? Milos, though, he's going to turn the numbers around as he ends up getting one player knocked. And there you go. That's all it took. Navi had to wait for them to get one of their own players eliminated. To find that opening is going to hurt them a little bit, but now they have great control of this area. And a team that we haven't seen much of so far is going to be Team Falcons, and now we're going to be getting some action out of them. We have All Glory Gaming passing by. This is a fight that you do not want to get into, All Glory Gaming. Just keep going, keep driving, and get out of there as Team Falcons is looking to secure a lot of this area and control pretty much the southern part of the map at the moment. Well, they're going to be making the push here to Old Glory Gaming. Here we go. They were able to spot him. They didn't let him go. Those shots are going to be coming in. Action is able to back up his boy there. I see it. He's going to be getting picked up. A little bit scary there for Team Falcons. They don't want to end up losing any players right now. But now that they were able to clear that team, they're going to have just a lot of control there towards the side of this circle. I mean, that was just to get the blood flowing again, right? They just want to make sure that they are as hyped up and ready to roll as they can be. Interesting position coming through here from the Whales of War. Also just going to be holding on towards Gatka over on towards that eastern side of zone. If the zone is going to be kind of pulling in towards this eastern side, this could be quite a bit of a position to utilize, but we'll find out soon enough where it is going to be taking us. Meanwhile, decent spread. Inco also about to, well, bring their contribution as they are dipping up in towards the zone. Quite a contested region that they're deciding to rotate up, right? We did see Horaa up there. We got Fireflux. We got Nigma also just off in the distance, but it does seem like Inco Nene Bete finds themselves a little bit of that Malik action. 1 down, 3 more to go. Nene Bete and Inco team looking to get a lot of points. Horaa Esports, another team that's looking to get a lot of points, but it's not looking good for them. As you mentioned, one of the players is currently knocked. He's going to end up getting picked up. Inco now making a push. Vitali trying to get those off angles. He's going to be able to knock one player right there. He does end up getting knocked, but they do end up trading. 2 players are still alive there for Horaa Esports, still standing. And Inco now trying to make this push. Now trying to clear this area. And if they do end up doing it, they need to do it quickly. This man is an absolute magician as he was able to run there through the fire. And Horaa Esports making sure that they clutch up all these points and try to recover as fast as possible. Fireflux trying to get a little bit lucky here and see if they can possibly get some cheeky eliminations.
Yeah, that was Nene better now deciding to get the heck out of Dodge, but it is going to be Fireflux looking to clean it up as Lux and comes in quite aggressively. It is going to be Ketch also setting up a beautiful position just over towards that southern side, but let's see whether or not Fireflux can flush them out. The first hit is in. That is going to be Nofia down on their knees. Ooh, a little bit of a trade through the window. Malik looking to see if they can find even more of a continuation here. Solus quickly having to patch themselves up, but it's going to be Sky letting the nades loose. Lux is dodging all over the place as Mafia Ninja gets dropped to their knees, but now it's down to one. Fireflux, they know it is just around the corner. They just got to make that extra little bit more of a push, but let's see whether or not they'll be able to get it. Up comes the opportunity now. The angle is there. One now is all that stands between Fireflux and yet another squad wipe. Sky trying to figure out where it's going to be the best place to hide. But the trade-up is there on towards Lux. One more coming through. Absolutely insane play coming through here. Sky tries to defend, but it's going to be a 2v1, and they will not be making it out of that one. And honestly, Horaa Esports right there with the way that they were able to control this building, defend these two buildings for the longest time. I am impressed with what they were able to do. Sky, the main player, the main MVP out of that team, trying to clutch up those extra points there. He was able to clutch up at least 1 point there from Fireflux, and Fireflux not going to be happy that they ended up losing that one player. And guess what? We're talking about earlier about Vampire Esports, what they were going to be doing if they were going to be prioritizing the center of the circle here in this match. They're playing this out very, very well, because right now, with the way I'm looking at the map, you don't want to be anywhere near the center of it. And they're looking to get into other fights as well, trying to see where Navi is going to be coming in from. And keep in mind, Navi is down one player. Vampire Esports will have the numbers advantage. Another team we haven't really seen much of, Royals of War. I mean, this team, we've been wanting to see more and more and more, considering that they were able to have just such a good performance in day one. And here comes the push. They're going to be pushing Influence Rage. This is going to be a massive fight, because Influence Rage, they end up getting a big old donut in the first match. They don't want to end up getting another 0 here in this match, even though they do have 3 eliminations. Here comes the push. Influence Rage, Federal being able to clutch up some of those eliminations. Roger War now trying to find the different angles. Little Boy trying to spot the other players. There's so much commotion happening right now. Players from Royals of War, players from Influence Rage are currently getting knocked. Little Boy's just spraying and praying in the smoke and hoping that he hits with something. And another player there from Royals of War trying to make it through. Only Law is alive from Influence Rage, and he is gonna get, at least he's gonna get some of the other teams confirmed. And there you go, Influence Rage gets knocked. Royals Awards end up winning that engagement. Wow, what a floor, what a play. Royals Award on a 3-piece move, but there's a nade coming through the door. Fireflux, looking to capitalize on the carnage. Already finding that first bit of a pickup here, but let's see, is there more of it along the way? Royals Award super low on HP. Rivas is down. It now turns to Aragon to see if they can survive, but Fireflux, they out here. They're looking for those elims. And I mean, so far, Seven, they're sitting on 9 already. Keep it going, Fireflux. Right now, if I was to name this team instead of Fireflux, I will call them the third-party kings, because they've been able to third-party absolutely everything. And on top of that, they're going to be looking to gatekeep here some of the players that are going to have to exit out of that building from Royals of War. Meanwhile, you know what other teams are currently chilling. Absolute chilling. Team Falcons, they have had to not do anything, and that's what I was kind of a little bit impressed earlier when they were able to take care of that one player from AGG, because they were just going to have so much time to work with. A lot of these other teams were going to have to fight it off and make it a little bit easier for them. And here we go, grenades there from Soulless from Fireflux, trying to find into anybody, but that surprise factor is gone. And guess what? I feel bad here for Royals of War, because not only do they have the third-party kings of this match already on them, on top of that, they have to worry about Team Falcons coming up from the top of the mountain, making this push and getting them eliminated as well. Well, let's see whether or not Rivas can survive the onslaught. As you can see, Ketch now just cooking up a few nades, looking to get some cooking going. And well, there it is. Royals of War at least managing to get those 5 eliminations along the way, but they do go out in placement point territory. Now it's going to be Vampires coming to life. You can see the shots connecting on through. It is going to be Psych, the next one to get dropped. Oh, but a cheeky follow-up here. I mean, Falcons, everybody just so active. Nigma also pushing on forward over on towards Vampire. It is chaos all over the zone.
Absolute chaos, and that's what we want to see. Enigma Galaxy now getting into the mix with this. It is going to be only 2 players. Navi making sure that they're going to try to see if they can possibly revive that player that were able to win the engagement between them and Vampire Esports, which that's going to be massive for them. But grenades are just going to start raining down as Freak and the squad is going to try to turn it up. But Freak ends up getting knocked and he switches it up. Lord, with that ghillie suit, gonna have to lay down. But guess what? It's not over, because you think it's over? No. Furia Esports is close by as well, and they're gonna be looking at third party this fight. Meanwhile, Team Falcons are just chilling in the background. Regnum Karya chilling in the background as well, as they've been inside those buildings. Here we go. Lord, can he clutch up this? He's not gonna be able to clutch up. He does get Artisan very, very low, but that is going to be it for Enigma Galaxy there. Now we switch it up. Furia trying to control this area. Navi, though, they've been able to pull things off. They're going to tell them to slow down as they send one of their players from Furia back to the lobby. I mean, Navi, it seems like they've now caught their second breath, right? They are starting to pace, starting to build. You can see Furia also holding nice and steady. They had quite a bit of possession coming into this phase, but to see whether or not Adrian can make anything happen, is there going to be an opportunity available? But this is where things also get so dang challenging, right? Because you've got Icy from Falcons also just creeping up on everybody, playing the quiet game. Action, in the meanwhile, is going to be focusing down on towards Regnum Karya, as they are yet to make a move. The plunge comes through. Cilias going to be moving right on up. Meanwhile, Axa, Puncher King, and of course, well, the players here from the side of Furia trying to settle the dispute, as this is such a very, very risky zone, right? I mean, 70, if you overexpose yourself too much, it could be the end right then and there. Yeah, with the way this area works out, I mean, even you saw it there from King on Navi. He tried to peek that a tiny bit. He thought he was safe, and then he had to just run away and hit the deck because he was just getting peppered. They are trying to be jumping into this car, seeing if they can possibly find the snake that is left. Anybody that might be trying to surprise them. Meanwhile, Adrian just throwing those smokes, throwing that utility nearby that team. Team Falcons making the push over. They're going to be able to spot a little snake there in the grass. Take quick care of them. Action now, driving around, seeing if there's going to be any other snakes. And now it's looking bad for Adrian with how he was positioned. He needs to be careful. Those smokes are going to be coming down, but he's going to let them know that there is a team there. And now Regnum Karya finding the right place, finding the right timing to make the push here towards Navi. And Navi, we saw what they were able to do. They can definitely make those pushes here so far in this game. They are able to defend it, as well as we saw earlier what happened with them and Furia. And Adrian needs to make up his mind. How does he want to be able to approach this situation? Because Falcons and the squad is going to keep running people over, and that's exactly what Action does. Action just needs to be careful and not overextend. Navi players are right there. He's going to hop out of that car because it's burning, but now he was able to gather that information. He knows that there's 2 players there from Navi, and he knows that they are pinned. Ooh! Navi up to double digits, and what a Nador coming out here from Axa. But I'm looking at an interesting development here, right? Regnum Karya, what a setup this is, because I mean the other 2 squads, they just fighting it out left, right, and center, right? But now this opens up the opportunity for Regnum Karya to come sneaking on through and capitalize on a beautiful third-party play. But it's all going to be down to how they play these next few shifts. You can see Navi looking pretty strong over on towards that edge, holding steady, as it is going to be Puncher King and Axa now just trying to at least clear out their region. But we are going to be stepping over into Zone 8, right? That is going to be the last one before there is no more. There is, and you were talking about Regnum Karya being able to get those angles. They're currently working this out perfectly. Things ended up backfiring there for Team Falcons. They were wanting to get aggressive. They were driving around. They're going to be able to go from 3 players down to just 2 players. Navi has just been so good at being able to defend this area, and that's why you're starting to see a bit of a slowdown there now from Action. No longer having access to that vehicle, no longer having access to being able to look over and just try to run over the snakes in the grass. Instead, he's gonna become a snake himself, as everybody is trying to find anybody lacking, anybody that's gonna peek a little bit too much. You were talking about earlier about the terrain, how crazy this is, and boy, it couldn't get any crazier than this. Everybody waiting to see what's gonna happen here. King hopping into that car. Luckily for him, he's not. Oh, he actually ends up getting shot. He was able to get spotted there by Wild 77K. That's going to be a knock, and he might end up being able to confirm this into elimination. Axer, I don't think Axer is going to be looking to move. I think he's going to end up sacrificing that player, because in the position that they're currently at,
You just want to stay as a surprise as possible, as long as possible. I mean, it does seem like Regnum Karya here are going for the divide and conquer approach, but it is going to be a little bit of a risky play still, as we do have AXA just keeping it nice, cool, calm, and collected. And of course, you got to remember who you're going up against, right? You got Falcons also just holding over on towards that eastern side as they're now starting to take aim over towards Regnum Karya. Here we go, action, Icy. Starting to roll on up, the buggy is out, but again, not a super aggressive push, just a slight little bit of improvement on that positioning. But here we go, action, not realizing that Silias is right in front of them, getting a quick shotty to the face. Yeah, Silas, one of the players that has won the PMGC before. The experience is there. He makes them back off. Here come down the nades. Action and Icy. It went from being non-aggressive to now making it be aggressive. But they need to be careful, too, because they have Navi on the right side, and that's exactly what's going to happen. Navi's going to be able to spot him. There goes one player from Team Falcons. It's going to come down to action, and on top of that, you do have still players from Navi that were able to recover that player that got knocked. Action, shooting back and forth. He's not going to be able to knock anybody. He's going to come down to a 3v2. Navi trying to take care of Wild 77K, who has the off angle, and they don't want that player to be in the back. DBS from that far away, he's gonna be able to hit it. They're gonna have to turn around, and now it goes from a 3v2 to a 2v2 situation here for Navi. Navi has played this game so well, and they're looking to try to secure extra points. They're looking to try to make it into the top 8. Meanwhile, Regnum Karya is looking to also try to get into the top 8. They want to get as much points as possible. Axer is going to be able to confirm that knock into elimination, and now it becomes a standoff here between 2 versus 2. Who's going to end up winning it? Navi or Regnum Karya as the grenades start rolling down? Well, this is looking like Navi is out here taking care of business. Now taking down the competition from a 3-piece to a 2-piece. Silias coming through with the nades, though, is going to be reaching right up into the side there of AXA. But AXA now quickly just patching themselves up as they are prepping for a full-on rush here. As you can see, it is going to be a very decisive decision play coming through from the side of Navi. 2v1, at least on the opening start. Oh, bringing it down to a 1v1 puncher, down to super low HP. And now it's going to be reliant on Kismeet to see if that nade can bring in that winner chicken dinner. No, it seems to be a flat. Ooh, all right. It was slightly overcooked. Not a bad call, but here it comes. And that those points, right? Clutched it up with a great performance. And I heard you say, Seven, a little earlier, right? You're talking about Regnum Karya. You were like, hey, we need to see at least 10 points a game from them. How about 8 eliminations and a chicken dinner, huh? I'll take that. I'll take that. It's going to make their life a little bit easier as we continue on. And that's ultimately what these players want to be able to do. Make their lives a little bit easier, because when you get towards the end and you have that pressure on your shoulders, it only gets tougher and tougher. And talking about pressure on your shoulders, a team that's going to definitely start feeling that pressure is going to be Influence Rage alongside with Inko. Yeah, I think that was perfect timing for Regnum Karya, to be honest with you. It's going to make their life a lot easier, because to pull off, 18 points here, they do not want to be right on the cutoff on that last game, DK, right? Because then you really leave that door open for the teams at the top to, try to take you out early. And not to mention, the teams at the bottom who unfortunately you're going to realize at that point that they have no chance. They could just decide to be toxic, right, as well. We don't know what kind of shenanigans are going to happen in the last game of the day, so you definitely want to put yourself in a solid position as fast as you possibly can. Yeah, I think this play coming through from Regnum Karya, it could have been their top 8
step up, right? That could have been exactly that. And I mean, what a way to come on through. But you also got to give it up to the players coming through from Navi, right? Navi also looking so good with the flow coming into this Erangale. So I'm really looking forward to what we'll have as we step over into number 2. But I mean, sweaty performances right out of the gate here. And they needed it. I love to see teams be able to put up points right at the exact right time, and this couldn't have been a better one, right? The fact that they are just been so consistent thus far, and to be able to put that out, man, these got to be excited. And not to mention, it's always, you got to give shout outs to Team Falcons, man. These guys are just running away with this thing at this point. As we take a look here at the match rankings, and yeah, look at that. भाई जो भी स्ट्रीम पर आ रहे हैं स्ट्रीम को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फटाफट I'm से just kind of laughing at myself here. I'm like, Team Falcons, just stop it. Actually, don't stop. Keep it going. I'm loving it here. 15 points for them. Fireflux. I mean, a lot of other teams starting to show up and being able to improve on their performances, wanting to take their destiny into their hands. And it comes down with Navi, the way, as DK was mentioning, the way that they were able to play there towards the end with just two players taking on fights with everybody, making sure that they made teams back off. At one point, I was wondering what was going to happen between them and Vampire Esports. I thought maybe Vampire Esports was going to be able to win that. 33 likes हुए हैं भाई boys. Hold up a lot of teams. So great match there for Navi. Yeah, well, we got a nice little interview with Silas. Let's take it on over to Carol. Here with me, Silas, the player from Ragnar Carrier Bra. Thanks so much for being here. And मुझे before चुप this करवा match, रहा you था guys had 31 रुको यार मैं ना points. स्टोरी लगा लूं For इंस्टाग्राम you पे guys to get into the top 8. Do you guys think you still can dream about that? Bu maçtan önce 31 puandınız. Buraya gelmeyi tahmin ediyor muydunuz? Bu maçı kazanmayı tahmin ediyor muydunuz? Ve bu maçtan sonra ilk 8'de olmayı hayal edebiliyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani tabii ki ilk gün biraz özgüvensiz geçti bizim adımıza. Yani biraz özgüvenimiz eksikti. Bugün de yani normalde bütün çalışmaları yapmıştık. Üstüne bir şey katmamıza gerek yoktu analizde falan. İlk 8'e tabii ki girmeyi hedefliyoruz. That's all. We didn't have the confidence to win the game after the first day, but we managed it, and now we are believing that we will be on the top 8, and we are ready for it, and it will be great for us. Awesome. And actually, do you guys have prepared anything in specific for today? Because we just watched an impressive match coming from you guys that were not in a good position. Bugün için özel bir hazırlık yaptınız mı? Çünkü sizi oynarken, izlerken çok etkilendik ve bununla ilgili sizinle gurur duyduk. अस्सलाम वालेकुम नेपाली कास्टिंग लगा लो ओके वालेकुम अस्सलाम लगाता हूँ अभी लगाता हूँ Yani ilk soruda dediğim gibi özgüvensizlik, onu hallettik. Zaten 1,5 aydır çalışıyorduk bu turnuva için. Bir sürü taktiğimiz var daha göstermediğimiz, göreceğiniz. You will see much more tactics, and we had some self-confidence issues so far, but we managed it. So just be prepared and see how we are playing. उधर इंटरव्यू हो रहा है इधर इंटरव्यू नहीं हो रहा भाई ये बड़े कॉपीराइट देते हैं म्यूजिक बैकग्राउंड पे जो लगे हुए समय ग्लोबल च्याम्पियन बनेको त्यो ट्रफी उठाएको प्लेयर टिमको एकजना इम्पोर्टेन्ट की रोल खेलेको प्लेयर पनि भनौँ त्यो जर्नीमा
सकिन्छ भनेर मैले सोचिरहेको छु एनिवे म्याच नम्बर 3 धेरै टाढा छैन हामीसँग अहिलेको लागि हामी एउटा तपाईहरुको लागि कन्टेन्ट भिडियोतर्फ जाँदैछौँ त्यसपछि जब फर्केर आउँछौँ तब तपाईहरुलाई म्याच देखाउनेछौँ विल बी राइट ब्याक यदि लाइक कर दो बॉयज स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि छोटो ब्रेक भनेका थियौं छोटो नै ब्रेक रह्यो धेरै टाइम बाँकी छैन हामीसँग म्याच स्टार्ट हुन यसै पनि इरेंगलको म्याप हेरे भर्खरै मात्र आरसीबीले म्याच जित्यो भन्दै फाइनली तिमीलाई पनि स्वागत छ आरसीबीले त म्याच जित्यो ठीक छ बट होरा स्पोर्ट्स म्याच निकाल्नु पर्ने छ फाइट राम्रो देखाएको थियो पछिल्लो म्याच पनि बट फाइटले मात्र भएन आई थिंक पोइन्ट लिएर आउँछ होरा कितने नंबर पे बॉयज इम्प्याक्टफुल वाला म्याच आई थिंक यो दुईटा इरेंगल मध्येमा एउटा मात्र निकाल्ने पर्छ भन्दै या अभियसली टिमलाई एउटा चाहिएको छ त्यो पोइन्ट बुस्टर गेम जसले गर्दाखेरि कन्फिडेन्स आओस् टिममा यो म्याचमा पनि र अघिल्लो म्याच पनि जुन पहिलो म्याच छ त्यसमा पनि कन्फिडेन्स वाला ब्याटल रहेको थियो टिमको त्यहाँ एउटा अफ गार्ड एंगलले सबै कुरा डुबायो अनि यो पारी थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्टले सायद त्यो थर्ड पार्टी एन्ट्री राइट टाइममा आइदियो जतिखेर होरा स्पोर्ट्स चाहिँ रिकभरी फेज नै भ्याइसकेको थिएन त्यो भइसक्दाखेरि टिमलाई त्यतिखेर त्यो कुरा डज गर्न अलिकति इम्पोसिबल नै देखिएको थियो नम्बर एडभान्टेज लिएर आएको टिमले उनीहरूमाथि हाबी भने प्लेयरलाई डाउन निकाले स्काईको एउटा एफर्ट मलाई मन परेको थियो लास्टमा उनले एउटा प्लेयरलाई डाउन निकाले अर्को प्लेयर क्याच भी घटाएका थिए अनि तेस्रो प्लेयरको एन्ट्री भएपछि बल्ल उनी चाहिँ वाइप हुनुपर्ने स्थिति बन्न पुगेको थियो होरा स्पोर्ट्स लेट्स होप यो इरेंगलमा जुन पोइन्ट्स नआइराखेको अथवा 2-4 2-3 पोइन्टमा उनीहरुको अड्किनु पर्ने स्थिति जुन बनिराखेको छ अबको अपकमिङ इरेंगलले त्यो कुरालाई कहीं न कहीं मेटाइदियोस् भनेर सर्कल परेको पनि छ नपरेको पनि भन्दिन म हिजोको दिनलाई यदि याद गर्नु अस्सलाम वालेकुम ब्रो डोन्ट गिव अप जस्ट कीप गोइङ जजाकल्लाह ब्रो मेंसिया ब्रो थैंक यू सो मच फॉर द मोटिवेशन पनि एज एक्सपेक्टेड गेम प्ले आएन भन्नेबाट पनि पाउनेछ नि हामी डेस्परेटली चाहन्छौँ कि एउटा नेपाल रिप्रेजेन्ट गरिराखेको टिम मेन स्टेजसम्मको यात्रा बनाउन् भनेर अब यसले कहीं न कहीं टिमलाई पनि प्रेसर दिइराखेको छ समहाउ हुन्छ नि त टिमलाई पनि हामी पनि आएको छौँ एउटै टिम आएको अडियन्सहरू सबै हामी माथि खनिने हो हामी गएन भने त गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराले पनि कहीं न कहीं हिट गरिराखेको त होला पक्कै पनि टिमलाई बट समहाउ जे जसरी हुन्छ यो कुरालाई मोडिफाई हेलो यानस असफाल अझै पनि 4 म्याच छ धेरै कुरा गरेको देख्न पाइन्छ होला भर्खरै पनि एक्जाम्पल देखिहाल्नु भयो तपाईहरुले आरसीबीको टिम 15 बाट कति माथि चढेको थियो 6 पोजिसन जम्प गरेको पोजिसन उनीहरुले पाएका छन् भने हामी पनि त त्यति हरिबिजक तरिकाले बसेका छैनौं 37 पोइन्ट एउटा 15 पोइन्टर 16 पोइन्टर गेम मात्रै आइदियो भने पनि कहीं न कहीं लेभल मिल्न पुग्छ कि अर्को एउटा म्याचमा कभर हुन्छ कि भन्ने जस्तो देखिएको छ भने एउटा सेकेन्डर निकाले भने त फ्याट्टे रेसमा हामी पनि आउने छौं या पक्कै पनि हामी धेरै टाढा छैनौं आई थिंक भनौं न एउटा म्याच राम्रो निकालियो भने त अलमोस्ट कभर गरिन्छ भने मिरामारमा हिजो पनि पोइन्ट आएको थियो एउटा मिरामार जसरी याद गर्ने हो भने पनि केही पोइन्ट आएको थियो वही लास्ट 4 म्याच डिसाइड राख्ने हो बिकज दिनको अन्त्यमा तपाई मिरामार खेल्दै हुन्छ भने तपाई पक्का पनि चाहनुहुन्छ बिकज हामी त्यो स्टेजमा छैनौं जहाँ हामी लास्ट दुईटा म्याचमा पोइन्ट आएन भने पनि ठीक छ हामीले ल्याइसक्यौं पोइन्ट भन्ने अवस्थामा छैनौं सो त्यो दुईटा म्याचमा पनि पोइन्ट चाहिने छ हिजो त्यसमा ल्याइएको थियो केही पोइन्ट त्यहीमाथि नर्दर्न सर्कल पर्दियो अलिकति थोरै भनौं न माथिबाट भगवानको पनि यसो हात ल ठीक छ गरी खाऊ भन्ने खालको बन्दियो भने त नर्दर्न सर्कल हाम्रो टिमले राम्रो खेल्छ हामीलाई थाहा छ त्यो म्यानेज गर्न सक्छ भन्ने विश्वास हामी राखिरहेका छौं टिममाथि सर्कल खासै प्रब्लम बनेको छैन कि इभन अप्ठ्यारो सर्कलहरु पनि इभन यही म्याचको पनि सर्कल यदि मन्दिप याद गर्ने हो भने जब सर्कल बनिरहेको थियो क्वेरी रिमेंसिया मैसेज डिलीट कर दिया यार आपने क्यों हस्पिटल अराउन्ड तर्फको सेन्ट्रिक सर्कल बन्छ कि जस्तो यार होड़ा चले जाए ना क्वालिफाई हो जाए
10 वोट्स में 10 होरा को किया यस, so 10 होरा. Halo, perkenalkan nama aku Satarles, yang biasa juga dipanggil BTR Satar. Kali ini gue bakal kasih pro tips buat kalian untuk PMGO player maupun PUBGM player. Langsung aja ke in-game. Oke guys, di sini kita kasih tips yang pertama, ya biasalah kita cari senjata buat di momen kayak kita main di Sano, kita cari shotgun atau senjata yang sesuai dengan kebiasaan kita lah. Cuman di sini mumpung kita lagi main di map yang susah nih, yang biasa di ABD, jadi kita pakai senjata shotgun. Satunya lagi itu bisa menyesuaikan dengan lootingan buat dapetin kill point yang banyak nanti. Nah, untuk tips yang kedua ini, kalau kalian pengen इसको सपोर्ट कर रहे हो रहा है स्पोर्ट को यार, हो रहा हो फाल्कन तो क्वालिफाई हो गया, अब हो रहा है स्पोर्ट्स को कर रहा हो रहा 18 पे 37 पॉइंट्स है, और टॉप 8 पे कितने पॉइंट्स हैं यार? टॉप 8 पे कितने पॉइंट्स थे? कौन सी टीम है? आई थिंक कल 42 कुछ थे. फाल्कन 25 पॉइंट रहते हैं टॉप 1. हाँ, फाल्कन तो क्वालिफाई हो गई है. इसमें सेम ही प्राइस फुल है, चाहे #1 है चाहे #24 है. satu santai. Oke guys, itu tips and trick dari aku. Semoga membantu player PMGO atau maupun player PUBG Mobile yang di luar sana. Terima kasih telah menonton. NGX सतारले सिकाउँदै थिए तपाईलाई गेम प्ले कसरी इम्प्रुभ गर्ने भनेर मैले अलिकति ध्यान दिएर नै हेरेँ. थोरै इम्प्रुभमेन्टको आवश्यकता रहेको छ मलाई. मन्दिप छन् जसलाई खासै इम्प्रुभमेन्टको आवश्यकता छैन. आई थिङ्क ओरा स्पोर्ट्सलाई पनि थोरै इम्प्रुभमेन्टको आवश्यकता छ भन्ने पोइन्ट चाहिएको छ भनेर हामी कुरा गरिरहेका छौँ. या उनीहरूलाई पोइन्ट चाहिएको छ सायद. अब त्यो खालको गेम प्ले आउँदैछ पिपल. अब आउँछ, अब हामी विश्वस्त भएर बसौँ होला, टिमले पर्फर्म गरेर भने चाहिँ देखाउनेछन् यो म्याचमा भनेर थोरै पोजिटिभ वेमा आफ्नो मेन्टालिटी हामी माइन्डसेट बनाउनेछौँ भने त्यो बिचमा टिमहरूले पनि त्यो खालको गेम प्लेको साथ ऑडियंस आई हुई है यार. वो स्पोर्ट नेपाली टीम पर नेपाली फैंस हेट पाक टीम से. अस्सलाम वालेकुम. ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक. अब त्यहाँबाट फ्लाइट पाथ बन्ने छ यार हम कर रहे हैं सेंट्रल साउथ एशिया की टीम्स को सपोर्ट. यार तो मैच स्टार्ट हो गया, वो देखो उसके हैंड कैम में नजर आ रहा है. गाह्रो परेको छैन. यस टाइममा गएर अर्को टिम भए तापनि उनीहरू वेट गरेर खेल्ने कोसिस त गरिराखेका छन् नै. फैल्कन जो बात है. सम्झिने हो भने गाडीको अप्रोचको लागि अगाडि बढ्दा बढ्दै उनलाई भने चाहिँ फिनिस गरिएको थियो. उनी भनेका थिए स्काई. टाइमिङमा अलिकति टल्कियो विपुल. नभए 3 फिंगर है भाई. भन्ने त्यतिखेरै स्टार्ट हुन्छ भनेर. ओके 2-300 मिनेट देखाइराखिएको रहेछ. 200 मिनेट 3 फिंगर था. मिनेट होइन मन्दिप, 300 सेकेन्ड. माई ब्याड. सेकेन्ड देखाइएको छ. अब 2-4 मिनेटको कुरा मात्रै रहने भयो. IQ की हाथ सेट होता तो चस बनाता. हाँ कोई ना यार. 9 बजे वीडियो अपलोड करूंगा एक, जिसके अंदर ना पलक का क्लच और दूसरी चीजें डालनी है. 9 PM अपलोड करूंगा. वैसे मैंने लगाई हुई है, लेकिन अपलोड 9 PM करूंगा. ओभरअल रूपमा हेर्ने हो भने नि त्यस्तो हुन्छ नि, बेला बेलामा यहाँ टिमहरू नराम्रो खेलिरहेको हुन्छन्, अरू केही क्लियरली मिसिङ देखिरहेको हुन्छ गेम प्लेमा. कि यो भइरहेको छैन टिमबाट, मेबी यो रोटेसन भइरहेको छैन, कोअर्डिनेटेड फाइट भइरहेको छैन, क्लियरली देखिन्छ. इभन लास्ट टाइम जब हामी कुरा गरिरहेका थियौँ, लास्ट म्याचमा पनि जब त्यो आरसिबी र नाभीको फाइटको कुरा गरिरहेको थियौँ, त्यहाँ भनिरहेको थिएँ कि आरसिबीको सुरुवातमा अलिकति त्यो ब्याटलमा कोअर्डिनेसन देखिएन लास्टको फाइनल सर्कलको त्यो ब्याटलमा भनेर. पहिलो फाइट जुन एकजना प्लेयर मैं सिर्फ फाल्कन और यसी फाल्कन तो फिर किंग है ना. ओके सर्कल म्यानेज भइरहेको छैन भन्ने होइन, भन्ने पनि होइन. त्यो पनि सर्कल म्यानेज भइरहेको छ, सर्कलसम्म हामी पुगिरहेको छौँ. स्ट्रेबलर से नोमोस मैं सिर्फ फाल्कन टॉप्स. गरिरहेका छौँ जसरी लबीले रियाक्ट गरिरहेको छ, जसरी लबीले खेलिरहेको छ, त्यो अनुसार भाई नोवा भी आई, भूल गए हो. नोवा भी खेल रही है. पहले बड़ी देर बाद ग्लोबल इवेंट में आई है. नोवा का देखना पड़ना है कैसे तगड़ा गेम प्ले होता है. फाल्कन्स 8वीं साथ. वेलकम टू द स्ट्रीम साथ भाई, कैसे हो?
कम्पेरिटिभली छिटो भइदिनु भएको थियो भने पाउन होरा सक्थ्यो। वालों ने मेहनत बहुत की। हाँ, होरा वालों ने मेहनत तो की है। देखो क्या बनता है, अल्लाह खैर ही करे। We were the last one to rotate into the circle. जुन अवस्थामा हामी थियौँ सेकेन्ड सर्कल सिफ्ट भइसक्दा सबैभन्दा टाढा र सबैभन्दा ढिलो रोटेट गरेर गइरहेको टिम हामी थियौँ। हामीसँगै झरेको टिम आइएनएफ जो थियो, जो सेकेन्ड सर्कल अलमोस्ट बन्दा बन्दा एउटा राम्रो स्पटमा उनीहरू पुगिसकेका थिए। अल्दो उनीहरूले पनि राम्रो धेरै खतरा नमक कैसे भूल गया मैं, हाँ जो बात है। टाइमिङको हिसाब गरिरहेको छु म। त्यो तरिकाले हेर्ने भने हामी अलिकति मजा आना भाई फाइनल्स में, ओए होए फाइनल्स में चेस आनी स्ट्रीम करने की। गएर बस्नु पर्यो जहाँ फाइट लिन अलिकति कम्पेरिटिभली गाह्रो हुन्छ। बिकज लास्ट टाइम चाहिँ हामी फाइट लिँदै थियौँ, त्यहाँ थ्रोएबल आउने, थ्रोएबलकै साथमा अपोनेन्टले नक निकाल्न सक्ने, इभन थर्ड पार्टीको लागि ओए होए होए जोन कितना गंदा करता है। वेयर इज होड़ा? ओके थोरै वर्कआउट गर्न सकिन्छ कि। बट यहाँ वान सेकेन्ड माफिया निन्जा अनि उनको सुप्रिमेसी, त्यसमा बिलिभ गरौँ हामी, विश्वास गरौँ त्यहाँसम्म पुर्याउनेछन्, त्यो स्टेजसम्म पुर्याउनेछन् जहाँ हामी टिमलाई हेर्न चाहन्छौँ भनेर। मेबी कता कता म त एउटा नो फियर स्पेसल म्याचको वेट गरिरहेको छु। गनको साथमा भाइले एकपटक मजाले यो गर्न सक्छु म भनेर देखाइदियो भने आई थिङ्क टिमको पनि थोरै जोस अझ थपिन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। हुन त जोस कम हुने प्लेयर त कोही पनि देख्दिनँ म त्यहाँ। सबैजना भनौँ न चारैजना प्लेयरलाई हेर्ने हो भने पनि यो प्लेयरहरूमा त जोसको कमी कहिले हुन्छ होला र जस्तो फिल हुन्छ। बट या अलमोस्ट रेप्लिका काइन्ड अफ सर्कल बनेको छ। सेकेन्ड सिफ्टले धेरै कहानी बयान गर्नेछ। या तर त्यो धेरै कन्फ्युजिङ खालको सर्कल नबनाउनु। हाँ फाइनल्स का अपना मजा हर टीम से होती है, फुल जोश। एभरेज साइडतिरको अप्रोच सर्कल फर्मेसन बनिदियो भने पनि केही ड्रामेटिक सिचुएसन सिनारियोहरू बनेको भने चाहिँ देख्न पाइन्छ होला। यस टाइममा हेरिन्छ भने दुईटा टिमलाई देखिएको छ स्पिड फर्मेसन लुट्छन् आरामले जान्छन् भनेर म अघि भर्खर गेम स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि पनि भन्दै थिएँ। अब अहिलेसम्म नदेखिएको ब्याटल आज देखिन्छ भने त राम्रो जाने, नभए टिमहरू केसम्म अभोइड गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ इन्ट्रेस्टेड हुने नै गर्छन्। हिजोको दिनमा पनि आइएनएफको टिमले अभोइड गरेर क्विकली निस्केर 5 एलिमिनेसन बटुलिसकेको थियो। अब त्यो खालको अच्छा होड़ा 18 पे है, टॉप 8 पे 58 पॉइंट है। होड़ा 18 पे 38, 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 21 पॉइंट्स का। मुश्किल तो नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है भाई। वैम्पायर ने कमबैक किया चिकन करके। हो रहा हो यार, एक चिकन की मार है 38 40, एक चिकन की मार है। टॉप 8 10 में बैठ जाए सेम जोन अगेन। आई थिंक लाइट गई है भाई, रुको मैं लाइट देख के आता हूँ। ब्राजिलको टिम भनिसक्दाखेरि त हो यो टिमहरू त धेरै माथि चढ्नुपर्ने टिम हो भन्ने खालको मेन्टालिटी हाम्रो दिमागमा छापिएको पनि छ। अब त्यो रिजल्ट नआइसक्दाखेरि टिम पनि सोच्दै होला किन आएन, बट कभर अप गर्न सक्ने एउटा एकदमै क्लोज सिचुएसनमा टिमले आफूलाई लगेर राखेको चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। बाँकी टिमहरू को कहाँ झरेका छन् त्यो तपाईँहरूको स्क्रिनमा आएको छ, लाइभ लोकेसन देखाइएको छ। खासै कतै हलचल र चलपल छ, ब्याटल पर्ने जस्तो देखिएको त छैन। यस टाइममा दुईटा टिम देख्न पाएका छौँ, बट दुईटै टिमले अभोइड गरिराखेका छन्। थोरै भागभण्ड भए जसरी नहीं यार, ये एक चिकन चाहिए हो रहा को। हाँ एक चिकन चाहिए भैया। अगर 4 मैचेस टोटल पड़े इसके बाद 3 रह जाएंगे, तो इस मैच में अगर चिकन कर लेते ना तो आगे तो हम पॉइंट्स को मेंटेन करके चल सकते हैं। बाकी देखो क्या बनता है भाई। जो भी स्ट्रीम पर नहीं आ रहे स्ट्रीम को लाइक कर देना यार। 42 लाइक्स हो गए हैं, 50 लाइक्स कराओ जल्दी से। सबैले बुझेका त छन्। तपाईँ यहाँसम्मको मेहनतले यहाँसम्मको रिप्रेजेन्टेसनले तपाईँलाई अलिकति काफी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अन्टिल तपाईँ मेन इभेन्टमा गएर एउटा राम्रो छाप छोड्नु हुँदैन। धेरै पर्सपेक्टिभ द्वारा तपाईँलाई भने घाटाको विषय बन्न पुग्ने छ। त्यो क्वालिफाई जो मर्जी हो, ट्रॉफी फाल्कन की है। जो बात है साथ भाई, जो बात है यार। जेब्रा मास्टर के ना मैचेस खत्म हो गए हैं, तो आई थिंक टॉप 4 में है शायद। मैं बताता हूँ, रुको जरा। ओके जरा मैं बताता हूँ, वेट करो। सायद देखाउनेछन् कस्तो खेल्न सक्छौँ हामी भनेर। उनका लागि त चाहिएको पनि छ आरसीबीको लागि, बिकज पछिल्लो आउटिङ पनि ग्लोबल सर्किटमै दिएर्ने पनि आई थिङ्क पीएमजीसीमा देखेको थियो टिमलाई। बिहारे भन्ने टिमको नामबाट देख्न पाइएको थियो। त्यो बेलामा त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स आएको थिएन। सो धेरै कुरा पनि भएको थियो। भाई आईएससी भी है, एस्ट्रोजी भी है, नोवा भी है, अल्फा 7 भी है। तो वैसे तो यही चांसेस है इसमें। मज़ा आना भाई, कंपटीशन देखने का मज़ा ना। जेब्रा मास्टर भाई, जेब्रा मास्टर हैश 2 पे थी, अब हैश 4 पर आ गई होगी या 3 पे। अच्छा सेम जोन अगेन। मैं आगे सेम जोन, मैं आगे को भी सपोर्ट कर रहा। अच्छा AGV2 ये कौन सी टीम है? ये चिकन जो हाँ क्वालिफाई होगी। ZM हैश 3 अपनी बियर्ड ही दे दे भाई। यार मेरी बियर्ड माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगाना बस कोई भी।
भैया अपनी बीएड की बहुत ज़्यादा मैं केयर करता हूँ, समझा करो। फिर मामा कहती कट कराओ, मैं कहा नहीं भाई नहीं, समझा करो। साथ आईएससी भी है अयान, आईएससी पर तंजोर न डालो, उनका लक दे गया था। साथ आईएससी है तो पर फाल्कन इस बार नहीं चढ़ गए। एसान भी है भाई, एसान भी है, अस्तुजी भी है, नोवा भी है, सारे ही हैं इस बार। आगवी 2 जीत जाएगी। आगवी 2 अच्छा 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 अच्छा, मैं भी कहूँ किसकी बात कर रहा है है तो मजाक ना उड़ा। अभी 4 मैचेस हैं, 4 के 4 चिकन निकालिए ना, टॉप 8 में आगे बैठ जाए। नहीं 4 चिकन 40, और अगर 20 की एवरेज 50, 20 40 80 पॉइंट, नहीं ये भी नहीं होंगी, बहुत कम पॉइंट्स हैं। 141 बहुत अच्छा खेल रही है, 8 के लिए बहुत मुश्किल है टॉप 1। हाँ आज इस टूर्नामेंट में के लिए मुश्किल। अब भाई टेडी ऐसे लक तो हर कोई डिजर्व करता है वे ओ नाइस भाई, ये होता है भाई, अपना टीममेट जा रहा है रोटेशन के दौरान, रॉफ उतर रहा है, उसने उसी टाइम नॉक किया। नाइस वन, ये होती है जी। इधर भाई हम अपने टीममेट को फायर पा रहे होते हैं, हम अपनी जगह रोटेशन ही चेंज कर लेते हैं। वो ओपन में उतरा, ओपन में उतर के उसने अपने टीममेट्स को कवर दिया। एनजीएक्स है कहाँ पे है? ओए एनजीएक्स के 42 पॉइंट है, वो भी इन द गेम है भाई। बस लक तो फिर एक को ही टॉप कराता हूँ। 940 होंगे मैचेस बॉयज यार। 9 बजे मैंने ना वीडियो अपलोड करनी, मैं कह रहा हूँ कि ना, मैं कह रहा हूँ मेरी वो वाली वीडियो 1K व्यूज हो जाए ना उस वीडियो पे, देन इंशाल्लाह करते हैं अपलोड। आई8 को टॉप 1 ही जरूरत भी नहीं रफ तो रॉफ है ना फिर। हाँ रफ तो रॉफ है भाई। जल्दी से 50 लाइक्स कराओ यार। कितने हुए हैं? 44 लाइक्स हुए हैं। वेयर इज होरा? होरा ऊपर से रोटेशन कर रही है। ओए होए होए, अगर यहाँ से होरा जॉर्जिया सिटी वाली सिटी में चलेगी ना, यहाँ ट्रिपल वेयर हाउस ले ले भाई, होरा कोई चिकन हो जाना। चल चल होरा भाग, होरा भाग। वंपायर ने भी अच्छा कमबैक कर लिया। होरा भाग 2-3 डिफरेंस। ओके फायरफ्लैक्स एनजीएक्स नावी फ्यूरिया। वंपायर की फाइट हो गई है, डेड कर दिया बल्कि। 9Z जहाँ जा रही है ना ऊपर, टीम फ्यूरिया रहने वाली है। आई8 की घोस्ट और ब्लेड किधर गए हैं? वो नहीं खेलते। जो आई8 का घोस्ट है वो R3G में चला गया घोस्ट, और जो ब्लेड है वो रेज में है। ब्लेड रेज में आजकल डेड आइस के साथ खेल रहा है। ओए होए होए, ओए होए होए, ओए लो काम चेक कर उसके। ब्लेड की टीम चेंज हो जाएगी क्योंकि रेज ऑलमोस्ट सारे ही चले गए हैं रेज में से। दोनों को निकाल दिया मैंने। ब्लेड जल्द ही डी में चला जाएगा। आजको हामी तेस्रो म्याचमा छौं। 9th म्याचमा पुग्दा केवल 6 पोइन्ट छ यो टिमको। एकदमै खराब रहेको छ टिमको स्थिति। हेलो फ्यूरिया ने इससे भी खा जाना। होरा दिखाओ यार, होरा कहाँ गई है? ओए होरा आ गई है, जैसे मैंने आपको बताया था जॉर्जिया सिटी वाली सिटी में। ब्लेड ट्रायल दे रहा है अभी डी यार, ट्रायल नहीं दे रहा वो, उसने बोला सिम मैं अभी टूर्नामेंट खेल रहा हूँ उनके साथ।
क्योंकि रेज में वैसे ही अब रेज में कोई है बचा ही नहीं है, रेज में सारे ही चले गए ऑलमोस्ट। बाकी देखो क्या पता ट्रायल दे, अच्छी रोटेशन हो रहा की तरफ से, काबले काबले क्या कहते हैं, काबले तारीफ, हाँ काबले तारीफ रोटेशन हो रहा की तरफ से। बस हो रहा ने तो डिफेंड करना है, हो रही कि हो रहा का चिकन आना तकरीबन ना 16 प्लस किल्स के साथ, 16-17 किल्स का चिकन आना है हो रहा का। वो बना रहा है फैंस को, वो बना रहा है फैंस को। हाँ रेज वाले भाग गए, रेज वाले सारे चले गए हैं, कोई किधर चला गया, 141 में 2 चले गए हैं, कोई किधर, ऐसे बस तारीफ, हाँ काबिल तारीफ। साथ भाई समझदार। रेज एमजीएस वाले प्लेयर्स गए, रेज वही एमजीएस वाले रेज, दो एमजीएस हो रेज हो, दोनों एक ही चीज़ है बस। काबिले दीद, हाँ ये बात है भाई, ये सही है, काबिले तारीफ से जैसे काबिले दीद, क्या बात है यार। लिटरेचर के कितने माया नाज हमारे पास स्पेक्टेटर्स बैठे हुए हैं स्ट्रीम पे। उर्दू लिटरेचर के, सॉरी। एसटू जी का साइलेंस इधर गया हुआ है आरसीबी में, पता नहीं कोई मेरे से पूछ रहा था उस दिन। रंगम साइरा बरा यहाँ गया हुआ है। फाल्कन भाई, फाल्कन रुकने का नाम ही नहीं ले रही, फाल्कन रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जोन जोजो के हिल पे एंड होगा, जोन जोजो की हिल पे हो, मेन हिल पे ना, टॉप मिनी से जो बात है। भाई 50 लाइक्स हुए कि नहीं हुए, जल्दी बताओ मुझे यार, 2 लाइक्स रह गए, जल्दी जल्दी 50 लाइक्स कराओ जालमो। 9 बजे ना मुझे बताना, मैंने वीडियो अपलोड करनी है 9 बजे, रुको मैं स्केड्यूल लगा ही देता हूँ, अभी लगा देता हूँ, ये ना मैं भूल ही जाऊँ। 9 बजे थर्ड अप्रैल है, 9 PM। ये देखो भाई लगा दिया, नजर आ रहा है कुछ, अगर फोकस हुआ है तो। हाँ देखो आ जाए, 3 अप्रैल 9 PM वीडियो पब्लिक हो जाएगी। चलो चलो चलो, फाल्कन जितनी मेहनत कर रहे हैं ट्रॉफी स्टार ले जाएगी। यार इस पे 1000 व्यूज ही नहीं हो रहे, इसलिए मैं वो पब्लिक नहीं कर रहा। आजकल ना वैसे ही बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। देखो ना इस पे ना तकरीबन 857 कुछ हुए हैं, 1000 हो जाए ना, मैं कह रहा हूँ फिर मैं अपलोड करूँ, नहीं तो इस वीडियो की रीच भी रुक जानी है। i8 के ओल्ड स्क्वाड कौन सा था यार, ये टेडी बताता है i8 का ओल्ड स्क्वाड कौन सा था। सबसे पहले वाला स्क्वाड बताऊँ, उसमें उजम था, जॉनी था, ब्लेड था और क्रिप्टो था, हाँ शायद यही था, हाँ यही थे सबसे ओल्ड वाला। उसके बाद फिर चेंजिंग होती गई। फाल्कन जैसे मैंने कर यहाँ i8 का ओल्ड स्टार ओपी इन द चैट बाई 0 स्टार बिगेस्ट फैन वेयर आर यू। अच्छा i8 के बाद माई फेवरेट इज रेज, और आपकी i8 के बाद कौन सी है? i8 के बाद मेरी R3G है, डी नेपाली टीम, डेड इज गाइस नेपाली टीम जी जीस, आईसी मोटा भाई के बचाओ। यस मेन हिल पे लग तो यही रहा है, जितनी मैंने फॉलो किया न्यू मेटा में बहुत काम मैसी जगह एंड होता है जहाँ क्लस्टर होने के चांस हो। फाल्कन का चिकन है। जो बात है हो रहा वर्सिफ हेलो, 2 नॉक, हेलो वंपायर ने पुश भी कर दिया। नाइस वन, और 2 नॉक, लास्ट रह गया यार, और 3 नॉक, यार 3 नॉक यार,
यार एक तो नॉक करो ना यार, होड़ा मलिक कितना करे यार, 3 नॉक थे फाल्कन पे। ओए होए होए होए, क्या यार, एक नॉक थी यार, लिटरली पूरा स्क्वाड बच जाता लोगों का। फाल्कन का चिकन I-52 I-8 के बाद, हाँ ये भी बात भी है, 52 वही 7th एलिमेंट यार। नाइस वन हो रहा यार, एक बंदा मार देते वैंस की तुम, क्या यार इतना अच्छे से 3 नॉक थी। उसमें पहले चोक किया, दोनों ने डीबीएस चोक किया आपस में, लेकिन उसकी सेकंड डीबीएस लगी। ये बाहर क्यों किया एक बंदा हो रहा का, हाँ पता नहीं क्यों नहीं गया। आई थिंक वो गया नहीं है, वो ना जब गाड़ी से रोकी है ना वो बाहर ही था, नहीं तो वो भी एक नॉक कर देता ना, मजा आ जाता यार। वो बाहर था, उसके बाद पोजीशन अच्छी थी, वो जैसे भी गाड़ी से उतरा था ना वो स्प्रे मारा था। गया I-52 आरसीजी में से 3 बेस्ट में माई 3, हाँ तीनों ही बेस्ट हैं। R3 जी यार बहुत कमाल की टीम है। I-8 भी 7th एलिमेंट 52 तो वो अब अपनी PMGC टीम से ना, उनका तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। I-8 और 52 को छोड़ के आरते जी, कोई ना यार, अच्छी ट्राई थी, बहुत प्यारी ट्राई थी। मैं था वो को मार देता। कोई ना, इस मैच के बाद याद कराना, हम उसका CR7 होड़ा का रिएक्शन देखेंगे इस फाइट के ऊपर। ये मैच एंड होता ना, मुझे याद करवाना। ब्लाइन्ड स्पट खोज्दै खोज्दै सर्कलको एन्ट्री बनाउन खोजिरहेको छ उनीहरू। एभरेस्टबाट माथिबाट स्पटेड रहने खतरा सदैव रहन्छ। उता फ्रिकलाई डाउन निकालिन्छ आरसीबीको स्योलको तर्फबाट। आरसीबी पछिल्लो म्याच जितेसँगै सायद कन्फिडेन्स आएको छ, जुन कुरा हामी गरिरहेका थियौँ कि इन्टरभ्यूमा प्लेयरले पनि भने भनेर दोस्रो एलिमिनेसन आयो टिमका लागि। एजमा रहेको छ, खासै प्रब्लम नबन्नु पर्ने हो, बट नेक्स्ट मुभमेन्ट के गर्ने त त्यो ध्यान दिनुपर्ने छ। सोलले स्पटेड रहेका थिए, थोरै ढिला गरे, सोलकै तर्फ हेर्दै थिए साइलासले। यार निगमा बताएं क्या कर रही है। बाइ द वे एउटै सर्किटमा खेलेका प्लेयर हुन् साइलास, द बेस्टुजी खेल्थे सोलके, अनि सोलले फायरफक्सका लागि त्यही टर्की रिजन त्यही खेल्ने प्लेयरहरू आइडिया छ वो जो 1 मिनट रुको, कॉल आ रही है, वेट करो यार, निकालेको छ। 1 सेकंड बस। झन्डै 300 मिटर सर्कलमा जानु छ, अब कहाँ गएर खेल्ने त, स्पेस अलिकति कम बाँचेको छ। अबको यो मुभमेन्ट टिमहरूलाई अलिकति गाह्रो पर्नेछ मन्दिप, यो सर्कलमा मुभ गरेर जोसँग स्पेस छ ऊ हिरो हो यहाँ, बिकज धेरै ठाउँ बाँचेको छैन प्लेइङ सर्फेस। अब एकदमै अब भनौँ न अनयुजुअल खालको स्पेस मात्र बचेका छन्, ठाउँहरू यसो याद गरिन्छ भने त्यो कारणले गर्दाखेरि टिमहरूलाई एडजस्ट गरेर खेल्न भने चाहिँ थोरै गाह्रो पर्ने जस्तो पनि म देख्दैछु। फ्युरियाको केसमा फ्युरीको टिमको तर्फबाट ट्रेबलको साथमा जहाँ आउँदा निकालिँदैछ, माथिल्लो साइडतिरको अप्रोचमा ब्याटल चलिरहेको देतुलका प्लेयरले पनि सुनेका छन्, बट रियाक्ट गर्न सक्ने सिचुएसन अथवा उनको पोजिसन जस्तो चाहिँ यहाँबाट देखिएको त छैन। ट्रेबल गेम चल्दैछ, अर्को एउटा डाउन निकाल्यो, मेबी डिडब्ल्यूको टिम इन्ट्रेस्टेड छ माथि जान, बट अर्को एङ्गलबाट इन्कोको टिमको इन्ट्री पनि हुँदैछ। यहाँ एफइडी का प्लेयरहरू ह्यान्डल गर्न खोज्दै त छन् सिचुएसन, बट इन्फोको एन्ट्री हेभी इनफ बन्दैछ। टिमका प्लेयरलाई एकपछि अर्को गर्दै जहाँ त निकालिएको थियो, इन्कोका एउटा प्लेयरलाई रोकियो, समहाउ रिकभरीको फेजमा जानुपर्नेछ क्विकली। अगाडि अझै दुईटा टिम छन् जसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्नेछ, ट्याकल गर्नुपर्नेछ। इन्कोको टिमले धेरै क्याजुअलिटीको सिचुएसन बनेन अथवा ड्यामेजको सिचुएसन बनेन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि क्विक रिकभरीको पोसिबिलिटिज देखिएको छ। फ्युरियाका सोलो प्लेयर सर्भाइभ गर्दैछन्, डीपीको साथमा उनलाई स्पट गर्ने चान्सेस अलिकति कम रहला माथि रहेको टिमले, बट लोवर पोर्सनमा भएको टिमले भने स्पट गरेर सट दिन सक्ने पोसिबिलिटिज त्यहाँ थुप्रै देखिएको छ। डिडब्ल्यू एलिमिनेसन बटुल्न सकिन्छ कि भनेर के हाकिन मात्र थालेको थियो त्यो साइडमा, बट इन्कोको एन्ट्रीले उनीहरूलाई पुरै रोकिदिएको छ। उनीहरू जान चाहेनन् त्यो पोजिसनमा, थाहा छ चेपिनेछौँ भनेर अथवा उनीहरूलाई रोकिनेछ भनेर नम्बरले थोरै डिसएडभान्टेज दिएको छ, त्यही भएर कन्फिडेन्सको कमी त रहने थियो। देथुलको प्लेयरलाई डाउन निकाल्दै 7 अब अगाडिको एरिया खाली गर्ने एउटा राम्रो मौका भने चाहिँ पाएका छन्, पाथ क्लियर गर्ने कोसिस चल्दैछ। डिडब्ल्यू त्यो बीचमा आफ्नो पार्टनर बचाउनु पर्ने त थियो, थ्रोवेलको साथमा रोक्ने प्रयास, थ्रोवेलको प्रोजेक्टाइल जाँदैछ, ट्रेड चल्दैछ दुईतर्फी नै।
अहिलेसम्म कसैको थ्रोबलले इम्प्याक्ट पार्न त सकेको छैन। त्यो बीचमा DW का प्लेयरले रिकभरी भ्याउने भए लोअर पोर्सनतिर हेर्ने कोसिस पनि चलिराखेको छ। अगाडिको पोजिसन बाह्र पनि नोट गर्न एकदमै जरुरी रहेको थियो भने इन्को का प्लेयर नेनेबेटी सर्ट दिनको लागि भ्याम्पायरको अगेन्स्टमा जान त चाहँदै थिए, ड्यामेज डिल गर्नु पर्यो। त्यही भएर ओभर एग्रेसनलाई थोरै कन्ट्रोल गर्दै धेरै एक्सपोज नभइकन हिल गर्नतर्फ उनी लागेका छन् भने 6औं स्टेजको सर्कल हिलबाट तल झार्ने हो सबैलाई। फायरफक्सको प्लेयरको अगेन्स्टमा फाल्कनको टिमको तर्फबाट सर्ट दिने प्रयास, आइसीको 5औं एलिमिनेसन निकालेको यो टिमले फर्दर मोर बटुलिसकेको त छैन, बट म अवस्था हेर्दाखेरि यहाँबाट अझै एलिमिनेसन पोइन्ट बटुल्न सक्ने ठाउँ टिमले भने चाहिँ बनाउने छ जस्तो देख्दैछु। समहाउ यसो याद गरिन्छ भने 1-3 को स्प्लिटमा खेल्ने कोसिस गर्दैछ टिम फाल्कन। या फाल्कनले प्रयास गरिरहेको छ, 5 एलिमिनेसन बटुलिसकेको छ, अझै पनि अगाडि बढ्ने प्रयास उनीहरूको रहने नै छ। डेथवुल्फ्सको टिम उनीहरूलाई पनि पोइन्ट चाहिएको हो, 8औं पोजिसनमा रहेका छन्, बट पछाडिपट्टिबाट अरू टिमले पर्फर्म गर्दा सायद थोरै प्रेसर उनीहरूले पनि पक्का फिल गर्नेछन्। आरसीबीको टिम चढ्न खोजिरहेको छ, उता फायरफ्लक्स उनीहरू पनि चढ्ने प्रयास गरिरहेका छन्। 17th राउन्डमा रहेको टिम 2 एलिमिनेसन बटुलेको थियो, तेस्रोको खोजीमा टिम कोइसोको एगेन्स्टमा निग्मा ग्यालेक्सीले एलिमिनेसन बटुल्दैछ। सर्कलको सिफ्ट आउने बेला भइसक्यो, हस्पिटलतिर ढल्कियो सर्कल। भ्याम्पायरले एउटा एज पाएको छ, इन्कोको मुभमेन्टलाई टोटल्ली ब्लक गरिदिन सक्छ भन्दा भन्दै नै नेबेटीलाई त डाउन पनि निकालियो नुजीको तर्फबाट। अब 7 अनि भाइटाली माथि पुरै जिम्मेवारी आएको छ। यता फ्युरियाको एकजना प्लेयर आर्थ्रुजिन अगाडि गएर सर्कल बनाउने प्रयास गरेका रहेछन्, बट अर्को प्लेयर फ्युरियाका जो पछाडिपट्टि छन् कि उनी रिग्रुप गर्नका लागि जान भ्याउँछन् त, डुओ मात्र बाँचिरहेको छ फ्युरियाको पनि। यता DW के गर्छन् त उनीहरू, कहाँ जाने बारेमा सोच्ने हुन्। त्यही बिचमा उता कार्डिक उनले नक निकालेका छन्। टपको एगेन्स्टमा डीपीको सर्ट गएको थियो, एक्सनले राम्रो ड्यामेज त डिल गरे माथिपट्टि, बट गाह्रो नै भन्छ यो स्पेसमा फाइट गर्नु। त्यही बिचमा उता आरसीबीको एगेन्स्टमा फाल्कनको प्लेयरको नेट गएर कनेक्ट हुन्छ, नक निकालियो। 6औं एलिमिनेसनको खोजी, टपलाई बचाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि रहेको छ। आइसी अगाडि नेट तन्काउन खोज्दै थिए, अगाडिबाट पनि कभर फायरको सर्ट, आइसीले पनि ड्यामेज डिल गर्नु पर्यो। आरसीबीले त्यहाँ रिभाइभल चलाएको छ, स्मोक लगाएर एउटा भिजन ब्लक गर्ने प्रयास चलिरहेको छ। माथिको एङ्गल केयर गर्नु आरसीबीको लागि इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। उता फाल्कनका प्लेयर निर्जेड अल ग्लोरीको तर्फबाट नक हुन्छन्, टप अलरेडी नक रहेका थिए, उनलाई त बचाउनका लागि प्रयास गरिएको रहेछ। निर्जेड डाउन भए, टप जो रिभाइभ भएका थिए उनी फेरि नेटको साथमा डाउन हुन्छ, निर्जेड कम्प्लिटली फिनिस नै भए। फाल्कनलाई डबल ट्रिपल साइडबाट चेपिँदैछ, पछाडिपट्टिबाट फायरफक्सको पनि मुभमेन्ट देखियो अब फाल्कनको टिमले। आइसीको स्प्रे रहेको थियो, बट केजलाई खासै ड्यामेज त्यसले दिएन। एक्सनले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। यता अल ग्लोरी गेमिङ अर्को साइडबाट उनीहरूलाई हन्ट गर्दैछ, डबल साइड ट्र्यापिनमा त इजिली परेको देख्न सकिन्छ। केजले गएर गाडी रोकेका रहेछन् रुखको नजिकै। यता इन्कोको एगेन्स्टमा DWको ब्याटल बन्यो, इन्को थाहा भयो उनीहरूलाई भ्याम्पायरको साइडबाट उत्रन मिल्दैन भनेर यता DWको साइडबाट अप्रोच गर्न मिल्छ कि भनेर ट्राई गर्दैछन्। इगोडको नेट गएको थियो, खासै रिजल्ट त दिएन, बरु उल्टै 7को नेट आउँछ, अब्स्क्योरलाई डाउन गरिन्छ। अब ब्याटलमा पक्का पनि इन्भल्भमेन्ट देखाउनका लागि इन्को जानेछ। नुनेसको एचपी घटाउने प्रयास रहेको थियो, बट उनले डज गर्नका लागि भ्याए। अगाडिपट्टि प्लेयर गाडीमा बसेका छन्, देखेको छैनन् र नोज चाहिँ पनि थाहा भएको रहेनछन्। त्यहाँ नुनेजले 7ले उता फ्युरियाका प्लेयरलाई डाउन गर्छन्। नुनेजलाई DWGको साइडबाट सर्ट आएको थियो, उनलाई त कम्प्लिटली फिनिस पनि गरियो। डुओमा कन्भर्ट भएको छ इन्कोको पनि अवस्था त्यति राम्रो त छैन, 20th पोजिसनमा रहेको टिम हो। उता फाल्कन निक्लियो 10औं पोजिसनमा अनि इन्को अन्तिम प्लेयरमा कन्भर्ट भयो। भ्याम्पायर डोमिनेन्स देखाउँदैछ यो म्याचमा फेरि एकपटक। त्यो बीचमा भ्याम्पायरका प्लेयरलाई रोकिनै छ यहाँ। टिक्यूको टिम लबी छोडेर बाहिरिए, टप 7मा गेम कन्भर्ट त भइसकेको छ। भ्याम्पायरले त्यो नक भएका टोनीकेलाई बचाउने कोसिस गर्ला नगर्ला, अथवा उनीहरूको लागि यदि त्यो सिचुएसन बनेन भने पनि नम्बर अझै पनि जोगाएर राखेका छन्। आरसीबीको टिम अर्को एउटा सही म्याच, कन्फिडेन्सको कुरा अब आउँछ। कन्फिडेन्सको कुरा त्यस्तै खालको इन्टरभ्यू अनि यहाँ त्यही खालको गेम प्लेको साथमा टिम देखिँदैछ। इन्कोको प्लेयरको केसमा डिबिएसको मेट्रो कनेक्सन, एजीजीभी2को टिम केही हदसम्म पोजिसनमा केही सुधार ल्याउने कोसिस गर्ने खालको गेम प्ले उनीहरूको आउँदैछ कि 5औं एलिमिनेसन आइसक्यो, 6औं तर्फ पनि उनीहरू जाँदैछन्। इन्कोका विचाली किल गरी भ्याइसकेका छन्, यसको कुरा त रहने भयो। आरसीबीका प्लेयरलाई निग्मा ग्यालेक्सीको तर्फबाट रफले डाउन निकालिदिए। निग्मा ग्यालेक्सी 4 एलिमिनेसन विथ 2 म्यान सर्भाइभिङ, जोनले प्रेसिङ गरिसक्दाखेरि भिटालीलाई धेरै बेरसम्म बस्न अलिकति गाह्रो पर्छ कि यो सिचुएसनमा। 7औं स्टेजको धकेलाइले कहाँ पुर्याउने हो त। स्वेपको तर्फबाट निग्मा ग्यालेक्सीका रफलाई त डाउन निकाले। रुजी गर्भ स्पटेड, हायर ग्राउन्डको एडभान्टेजको साथमा भिटाली त्यो अवसर गुमाएका छन् अनि फेरि उनी एकचोटि त्यहाँ हेर्न चाहेनन्। माथिको साइडबाट एजीजीभी2का प्लेयरले एलिमिनेसन बटुलिदिए। त्यो बिचमा 6औं एलिमिनेसन टिमको लागि मेबी चिकन डिनर तर्फ नै टिम जाने कोसिस गर्ने हो कि यदि चिकन डिनर गेम कन्भर्ट गरिदियो भने त हु नोज। बचेका 3 म्याचमा यही कन्फिडेन्सको साथमा टिम खेल्यो भने जे पनि हुन सक्छ। यहाँ टप 8को स्पटको लागि जान सक्ने मौका टिमले पनि बनाउन भने चाहिँ सक्नेछन्। लेट्स सी कहाँसम्म इम्प्याक्ट पारेर यो टिम जानेछ अगाडि भनेर। भ्याम्पायरले टोनीकेलाई त बचाउन सकेनन्, बट स्वेप स्टोन र नुजीको यो कम्बिनेसनले रिजल्ट दिन सक्छ।
फ्युरियाको कुरा गरिन्छ भने 4 एलिमिनेसन पोइन्ट सर्भाइभलका लागि टिम जाने प्रयास गर्दैछन्। थाहा छ भ्याल्यु कति छ भनेर हरेक एक पोइन्टको। त्यो कारणले गर्दाखेरि सेकेन्ड स्पटसम्म मात्र आइयो भने पनि हामीलाई ठुलो हेल्प हुनेछ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका छन्। एकेएमको सर्ट कनेक्सन आउने भयो, रफलाई त एम्पोको स्प्रे त गइराखेको त थियो नै। दोस्रो एलिमिनेसन यहाँ फेरि बटुलेको छ। 8औं एलिमिनेसनमा ढकेलियो। हायर ग्राउन्डको एडभान्टेजबाट अरू थुप्रै भिजनमा प्लेयरलाई स्पर गर्न सक्ने चान्सेस रहेको छ अनि डिसएडभान्टेज लोवर पोर्सनमा उनीहरू जानुपर्ने थियो। बट एकेएमको साथमा फेरि एउटा जल्वा आरसीबीको प्लेयरको अगेन्स्टमा। एकेएम र 4S को कम्बो राम्रो चलिरहेको छ। उता केजलाई नेड गरेर लाग्यो आरसीबीको प्लेयरको। एचपी अलरेडी डाउन थियो केजको। फायरफक्सको टिम निक्लिएको छ। सोचे जस्तो म्याच गएन उनीहरूका लागि पनि। यो पछिल्लो इरेङ्गल जसरी खेलेका थिए लाग्दै थियो अब अलिकति एग्रो खेल्ने प्रयास टिमले गर्नेछ भनेर। एजीजी V2 उनीहरूको लागि त खेल्ने म्याच जाँदैछ। ट्राई गरिरहेका छन् कमब्याक लेख्नको लागि बट धेरै ढिलो भइसक्यो जस्तो पनि लाग्छ। बट बन्दीपले भने जस्तै 3 म्याचको कहानी बाँकी छ। नबिर्सौँ 3 म्याचमा जे पनि हुन सक्छ भनेर। ओ स्वाइप एम डुअल क्या गजबको कनेक्सन देखाए। त्यो आवाज सायद एकदमै सेटिस्फाइङ आयो होला स्वेप्सको कानमा पनि। हेड कनेक्ट हुँदा जुन टुडुङ 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 गर्दै कराउँछ बिकज मल्टिपल हेड कनेक्ट भएको थियो। त्यहाँ अगाडिपट्टि प्लेयर रहेका थिए। रिफ्लेक्समा सर्ट दिनुपर्ने थियो। एचपी राम्रो कम गराएका थिए बट डिभिएसको एगेन्स्टमा फिट गर्नलाई गाह्रो बन्यो। अब एजीजीको लागि पनि अवस्था गाह्रो बनिरहेको छ। एक गर्दै प्लेयर डाउन हुनुपर्ने सिचुएसन। नुजी जानेछन्, बचाउने प्रयास पक्का पनि उनको रहनेछ। नुजीले खाता खोल्न भ्याएका छैनन् विथ द एलिमिनेसन। स्टोनको नाममा 2 रहेको छ। टोनिकेले 2 निकालेर उनी फिनिस भइसकेका छन्। स्वेप्सलाई बचाउने प्रयास नुजीको रहेको छ। नुजीले रिभाइभल दिनेछन्। नजिकै फ्युरियाका एकजना प्लेयर आएर बसेका थिए। उता आरसीबीका प्लेयर वाइल्डले कार्डिक्सको एलिमिनेसन आफ्नो नाममा गरे। आई थिङ्क भ्याम्पायरको त्यो नक रहेको थियो। एलिमिनेसन चोरिएको छ यहाँ। अगाडिपट्टि फ्युरियाका प्लेयर छन्। एउटा नेडले ट्रबल दिन सक्छ भ्याम्पायरको टिमलाई। तर त्योभन्दा अगाडि नै फ्युरियाको प्लेयर आर्तुजिनलाई अर्को साइडबाट पनि सर्ट आउँदैछ। स्वेप्सले आरसीबीको प्लेयरलाई डाउन गरिदिन्छन्। आर्तुजिन नेट पड्काउन त खोजिरहेका थिए बट खासै कनेक्सनमा आएन। स्टोन राइट ह्यान्ड साइडबाट घुमेर लो स्लोपमा झरिसकेका छन्। मेबी स्टोनले एङ्गल बनाउन सक्छन् त्यहाँ त्यो प्लेयरको एगेन्स्टमा। त्यही युगो म भन्दै मात्र थिएँ। स्टोनले एङ्गल बनाए। फ्युरिया गोज आउट। 4 एलिमिनेसन, चौथो पोजिसनको पोइन्ट लिएर टिम निक्लिएको छ लबीबाट। भ्याम्पायर आफ्नो म्याचमा पकड दर बलियो बनाउँदैछ। हुन त आरसीबीको टिम पनि रहेको छ डुओको साथमा। आरसीबीको डुओले पछिल्लो म्याच पनि जिताएर दिएको थियो, जित निकालेको थियो। साइलास फिनिस भइसकेका छन् यहाँ। सियो पनि फिनिस भइसकेका थिए। तलपट्टि सुतिरहेका इजीजीका अन्तिम प्लेयर फ्रानलाई देखे उनले। अल ग्लोरी गेमिङ भर्जन 2 पनि निस्कियो। अब यो बन्नेछ ब्याटल 3v2 को, जहाँ भ्याम्पायर आफ्नो डोमिनेन्स देखाउन खोजिरहेको छ। वाइल्डमाथि जिम्मेवारी रहनेछ। पछिल्लो पटक नाभीसँगको ब्याटलमा वाइल्ड फिनिस हुँदा आरसीबी ट्रबलमा आएको थियो बट डुओले म्याच निकालेर दिएको थियो। यहाँ वाइल्डले अब आफ्नो काम गर्नुपर्नेछ। तर आई बिलिभ एलिमिनेसन वाइज पनि पोइन्ट राम्रो निकालिसक्यो। स्प्लिट स्क्रिनमा दुवैतिर के चलिरहेको छ दुईटै पिओभी देखिराख्नु भएको छ। अगाडिपट्टि जानका लागि स्मोक लगाउँदैछ भ्याम्पायरको टिमले। स्मोक लगाइएको छ भनेपछि पक्का पनि गएर नेट फाल्ने प्रयास हुनेछ। त्यो रिचको पल्लोपट्टि 8 एलिमिनेसन लिएर घुमिरहेको भ्याम्पायर अनि अगाडिपट्टि रहेको डुओको बिचमा यो ब्याटल हो। वाइल्डले ठुलो रोल प्ले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हुन त हायर एङ्गल अर्को प्लेयरसँग रहेको छ। माथिबाट मिठो भिजन बनाउन सक्छन् उनले बट पोजिसन कम्प्रोमाइज भइसकेको रहेछ। उनको एगेन्स्टमा केही प्रिफायर जाने प्रयास भएको थियो। आरसीबीलाई कर्नर गर्नका लागि भ्याम्पायर ट्राई गरिरहेको छ। वाइल्ड के गर्न सक्छन् त उनले। रुखको पछाडिसम्म जाने प्रयास उनले गरेको त होला नि, तर अलिकति प्रेडिक्टेबल एङ्गल बन्न सक्छ त्यो। एक्लै लड्ने भन्ने डिसिजन सायद आरसीबीले लिएको छ। दुईटा डिफ्रेन्ट एङ्गल बनाऊँ, दुईजना एक्लै लडौँ, एलिमिनेसन निकाल्न सकियो भने यो ट्रायललाई रोक्न सकिन्छ। बट भ्याम्पायर हुन् त रोक्न धेरै सजिलो, त्यति धेरै सजिलो त हुने छैन। इन्ट्रेस्टिङ मोडमा जाँदैछ यो। अन्तिम सर्कल हो। कोल्याप सर्कलका लागि सायद सेन्टरमा जानु पर्दाखेरि जानका लागि सजिलो होस्, एक्सेस गर्न त्यो स्पेस सजिलो होस् भनेर आरसीबीले एकजना प्लेयर पछाडि पनि पठाएको। थोरै कोल्याप सर्कलको बारेमा पनि सोचियो होला बट अब यहाँबाट लोकजियोलाई अलिकति प्रब्लम हुनेछ। स्वेप्सको एङ्गलको बारेमा उनलाई पत्तो छ। लो स्लोप झर्नुपर्नेछ, गाह्रो बन्ने थियो अलिकति बट नो, वाइल्डको कभरमा उनी जान भ्याउने रहेछन्। उता स्टोन पनि घुम्दैछन्। उनले पनि राम्रो एङ्गल बनाउन खोजिरहेका छन्। आरसीबीको प्लेयर दुवैको पोजिसन कम्प्रोमाइज भइसकेको छ। पिन डाउन पोजिसन रहनेछ मन्दिप। यो रहेको छ कहानी कोल्याप सर्कलको। कोल्याप सर्कल अलिकति एजमा पनि भयो टिम। जुनै पनि टिमले खाए पनि दोस्रो चिकन डिनर हो दिनको। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ दुईटै टिमको लागि इम्पोर्टेन्ट म्याच त यसै पनि रहने त थियो नै बट समहाउ कर्नर गरिएको छ। स्वाइप गonna be taken down. राइट टाइमको नक रहेको छ। मेबी यो सही मौका हो। अर्को प्लेयरलाई डाउन निकालिनेछ। लास्ट प्लेयरको पोजिसनको बारेमा आइडिया त रहेको छ। पिपुल वाइल्ड त गर्दै थिए। अब यो 1-on-1 को ब्याटलमा गइसकेको छ। वाइल्डको लागि पनि रेस्पोन्सिबिलिटिज रहेको छ। एकेएमको साथमा एनिमी घटाएका छन्। यता स्टोन डिबिएसको साथमा रेड छ। प्यालेट कनेक्सन आउन सक्छ। ओ
रिलोडमा जान लाग्यो मैले रिलोड गर्न थालेँ भने त्यो एनिमेसनमै म हट हुन सक्छु अथवा एनिमेसनमै मलाई टेक डाउन गर्न सकिन्छ भनेर सायद उनी आत्तिरहेका थिए त्यो भएकोले गर्दा गन स्विच गर्ने प्रयास गरे बट नो त्यो हुन सकेन डिभिएसले काम गर्यो स्टोनले आफ्नो काम गरे अनि भ्याम्पायरले दोस्रो चिकन डिनर निकाल्यो आई बिलिभ भ्याम्पायरबाट कोही प्लेयर आउनेछन् अब हामीसँग कुरा गर्नको लागि भर्खरै म्याच जितेको हो सो आई थिङ्क कोच आउनेछन् भ्याम्पायरबाट प्लेयर कमै आइरहेका हुन्छन् कोचसँग कुराकानी अलिक बढी भइरहेको हुन्छ थोरै टिमको मास्टर माइन्डको रूपमा इनपुट्स पनि दिइरहेका हुन्छन् हामी जानेछौँ इन्टरभ्यूमा त्यस पछाडि सुन्नेछौँ भ्याम्पायरका कोचलाई उनको कुरालाई सुन्नेछौँ अनि फर्केर आएर यो म्याचको बाँकी स्ट्याट्स अनि अपकमिङ म्याचको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ लेट्स गेट टुवर्ड द इन्टरभ्यू Winner, double chicken dinner. And I'm back here with Sartanek, the coach from the Vampire Esports. Congrats in this last match, was incredible. I can see the smile on your face. And let's talk about one भाई मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है ना, इधर ही हूँ मैं. qualifying for the PMGC, but you guys came for the PMGO with a totally different strategy. What have changed from last year for now? So it's about the in-game leader. So we changed from Ravenclaw to Stone. So that's why you will see our playing style is changed a bit. So we are not playing at the edge only anymore. We can play on the center of the circle, on the middle of the circle. So and also we are still focusing on playing on aggressive style to make the players more confident and more the good moral for them. Yes. So I hope it continue like this. And right now, you guys are practically qualified for the main event. What are your big expectations from the main event? I think I'm focusing on the moral first and the confidence because I think this PMGO is just like we can play together with a strong team around the world. So I think it's the biggest stage that we can try to maintain our morale and confidence first. So if we won the tournament, it's just the second thing. But the first thing is we focusing on teamwork and the confidence. Awesome. And because of your last results, the team last results, are you guys not afraid of any team comes for you? I think it's, as I say, it depends on the circle. So if you have more confidence and you have a brave to play, it's better than the other team. So I hope they will continue and maintain this morale. Awesome. Congratulations. And we'll see you guys in the next match. And hopefully, maybe a third chicken dinner. We'll see. 코치가 उनलाई कुरा पनि गरिरहेको थिए
How to be a portrait master. One, two, three, yeah. Bounce in the streets, I'm a boss till I call. Bounce in the beats, I'm a boss till I fall. I'm a boss. Hello boys, we are back.
दिखाया 2026 माशाल्लाह। व्यूज ऑन स्टार लाइनअप किंग फ्यूरी टैबी वांटेड विंकी शाका। विंकी कौन से वाला है ये? विंकी कौन सा? मैं बाहर हूँ बट इटली में नहीं होता। एशियन का का नहीं पता। ये 8 वाले स्लॉट कौन से टीम्स को मिले? और यार नई आइडिया में से ही भाई बंदे पूछ पूछ के थक गया। एक बंदा है, मैं आपको दिखाता हूँ यार, उसने मुझे इतना पूछा कि भाई किससे स्लॉट मिली है बताओ ये वो। मैं कहा यार मुझे बता होता, मैं पोर्टल भाई को ना बता देता, वो भी मेरे से पूछ रहे थे। ये देखो, ये देखो, अगर आप लोग को नज़र आ रहा हो, जो फोकस होने दो थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा अच्छा हीरो फिर बना के सेंड कर दे। अच्छा मैं भी बाहर हूँ लेकिन घर से। आरडी वाला विंकी, अच्छा अच्छा अच्छा, स्पिन विंकी आरडी वाला विंकी, अच्छा अच्छा। नो स्पिन ग्रीन स्क्रीन गोन अगेन। ओ यार ये ना मोबाइल को दिखा रहा था ना, जिसकी वजह से एशियन ऐसे हुआ था। देख रहा क्या नहीं झूठ, कौन नहीं झूठ बोल रहा, क्या बोल रहा, किस लिए बोल रहा? अच्छा मैं उसमें हूँ, मोबाइल ख़राब हो गया मेरा। अच्छा अच्छा, ए मैं ना दिखाता हूँ आपको ना, स्टार का एक प्लेयर छोड़ के तो गया रिसेंटली, वांटेड छोड़ गया। हाँ वांटेड टीम स्टार को छोड़ गया। इसने क्या पूछा था मेरे से? वांटेड छोड़ गया स्टारक्स मोटा ब्रो, वांटेड लेफ्ट टीम स्टार। अब वो रह गया, फ्यूरी रह गया। टीम मैचेस हैं अभी, हो रहा हैव टू टेक 1 चिकन। यार बहुत मुश्किल लग रहा है, हो रहा का हो रहा बहुत पीछे चले। नहीं नहीं ये देखो मेरे पास पोस्ट है यार ब्रो, वांटेड की ऑफिशियली पोस्ट है यार, ये देखो वांटेड फेयरवेल नो फ्री एजेंट। नहीं आरिफ गया है वो इधर ही है, आरिफ गया यार। इन्होंने ये तो पोस्ट लगाई हुई थी देखो, वांटेड
स्टार वांटेड फेयरवेल। यार ये देखो कलर उठा लेता ही, कैमरा कलर उठा लेता है साइडों से। अब इसने कलर छोड़ने भी नहीं है, छोड़ दिए। कैमरा इतना तेज है, जो भी इसके सामने रखो ना वो कलर उसका पिक कर लेता है। स्टार का बेस्ट प्लेयर वांटेड था। मेरे पास अंदर की न्यूज़ है ब्रो। ओके 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 ओके, अच्छी लाइन है भाई यार। स्टार भाई वैसे ना ये वाली, ये मैं आपको दिखाऊं, इस वाले जो ये मैं वॉच पार्टी कर रहा हूँ ना, इसका कुछ रुपया भी नहीं मुझे मिल रहा। मैं दिखाता हूँ, इसके ऊपर ना कॉपीराइट भाई मेरे बड़े आते हैं। ये देखो, ये जो वॉच पार्टी की है डे 1 की, इसके अंदर भी ये कॉपीराइट आया हुआ है, इनएलिजिबल लिखा हुआ है। ये डे 2 की इसके ऊपर भी आया हुआ है, देख सकते हो। दोनों नॉन मोनेटाइजेशन है, फिर भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं। टाइप कर रहा हूँ इसकी, वो हट जाए मेरे पास अंदर। अबे मुझे भी पता, अबे सब आते हैं स्टार से फेम लेते हैं और चले जाते हैं। इससे तो मैं स्टार से फेम नहीं लेता यार, फिर सब ने मुझे यही कहना कि टाइसन भाई स्टार से फेम लेके भाग गया। यार गलत बात है ना, फिर हम खुद स्टार के फैन है यार। एसटी माला दुख होता है यार, माला दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसकी क्या नहीं बन रही थी, वो फ्रैगर है, 5th प्लेयर था वो। आरिफ चौक छोड़ कर चला गया है। फ्यूरी शाका विंकी टैबी वांटेड है। आज वाली भी डिमोनिजेशन, हाँ डिमोनेटाइजेशन हो जानी आज वाली भी यार। तो ये ना जो पीछे मैं बताऊँ डिमोनेटाइजेशन लग किस चीज़ की रही है, आपको दिखाता हूँ। अगर मेरे पास वो शो हो रहा हो ना, मैं दिखाता हूँ। ये अभी तो मैं बहुत ज़्यादा रिमूव कर दिया है, एक सेकंड रुको। वेयर इज कॉपीराइट, सी डिटेल्स। ये देखो एक ये म्यूजिक का कॉपीराइट, ये म्यूजिक का कॉपीराइट, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये तकरीबन 3 मैंने रिमूव की हैं। 10 के करीब कॉपीराइट क्लेम्स आए हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी जो वीडियो है ना वो कर दिए, डीमोनेटाइज कर दिए। देखो दिस वीडियो कांट बी मोनेटाइज लिखा हुआ। मैं ट्राई करता हूँ कोई भी ना हो, क्योंकि पहले भाई चुकेगा $1 मिल रहा होता है। ये देखो ये है, इस पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे बनते कितने डॉलर हैं। देखो $27 व्यूज तो नहीं है ये तो ओवर, अच्छा है नहीं इसके ज़्यादा ही 27 व्यूज नहीं है, झूठ बोल रहा है। 27 से ज़्यादा। देखो तकरीबन मैंने इसके $0.01 2 घंटे स्ट्रीम करके तकरीबन कितना बना, $2 $78, भी नहीं पूरे हुए, समझ रहे हो। मैचेस खत्म नहीं मैचेस अभी पड़े हुए हैं। नहीं यार ऑलवेज स्टार ओपी ऐसा नहीं कहते। अच्छा यार लेकिन स्टार वाले परफॉर्म भी तो नहीं आती ना। आएगी स्टार की परफॉर्मेंस आएगी इंशाल्लाह। मैचेस खत्म, मैचेस पड़े हुए अभी 3 सारों के प्लेयर्स को खोज में आई था। PMSL में अच्छा खेला नहीं स्टार एक्सट्राइसन कमिंग सून। 3 रहते हैं मैचेस स्टार की परफॉर्मेंस देखो जाकर PMSL में। यहाँ ब्रो 3 मैचेस तक यहाँ हूँ। स्टार टाइसन कमिंग सून, वेलकम भाई। अभी 3 मैचेस पड़े हैं, पार्टी बहुत कम दे रहा है भाई। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो लाइक इन्होंने पैसे काटने हैं मेरे। जब इन्होंने एडसेंस में भेजना ना तब मैंने 20% काट लेने हैं। मतलब स्ट्रीमिंग में पैसा नहीं है ना होने यार, स्ट्रीमिंग में पैसा है लेकिन तब है जब अच्छे खासे आके व्यूज़ आ रहे हो, आगे तकरीबन 50-60 के व्यूज़ आ रहे हो, फिर जाके पैसा है। और स्क्रॉच वाले मैचेस
देखो है। हाँ स्क्रोच वाले मैसेज देखेंगे, मैंने ये की हुई है। रुको यार यूट्यूब अभी तो उसने टैक्स कोड काट रहा है। ये लाइव सेशन में जाओ ना, ये देखो ये स्क्रोच के मैसेज का लास्ट डे करना है। आज 9:45 पे स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है। यार मैं आपको ना हकीकत बताता हूँ, हकीकत ये कोई बताएगा नहीं, आपका टाइसन भी आपको बता रहा है। बड़े लोगों को शौक होता है यूट्यूब स्टार्ट करने का। ये देखो रेवेन्यू पे आ जाते हैं, कहाँ गए ये। मुझे ना वीडियो पे, हर वीडियो पे लाइक 1000 व्यूज़ पे ना 1000 व्यूज़ पे $0.022 दे रहे हैं। लाइक अगर मेरे 1000 व्यूज़ आएंगे ना वीडियो पे तो मुझे मिलेंगे $0.22। लेकिन वो जरूरी नहीं हर 1000 व्यू में मिलेगा। वो व्यू कुछ लाइक कोई पाकिस्तान से होता है, कोई नेपाल से होता है, कोई डिफरेंट रीजन से होता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा अप डाउन होता है। समझ लो 0.18 या $19 लगा लो 1000 व्यूज़ पे। और मेरे वीडियोज़ पे तकरीबन है 96 के व्यूज़ आए तो मेरे $21 बने हैं। ये महीने की बता रहा हूँ। शॉर्ट्स के अंदर मुझे मिलते हैं पर 1000 मिलते हैं 0.001, लाइक ना होने के बराबर। आधा 1 रुपया भी नहीं मिलता शॉर्ट्स पे। लाइव पे मिलता है 0.33 पर 1000 व्यूज़, लेकिन लाइव पे ना व्यूज़ बहुत कम आते हैं। 23.6 के है ना। रुको ये एग्जैक्ट नहीं होता ये लाइव वाला ना, वीडियो वाला तो एग्जैक्ट होता है ना शायद। रुको मैं बताता हूँ, क्योंकि इसकी ना आधे कुछ कर जा रहा है 23.6 तो $7.78 बने हैं तकरीबन। अभी वो 2 वीडियो डीमोनेटाइज हो गई हैं लाइव स्ट्रीम, तो इतना पैसे मिल रहे मीन्स के हज़ारों मेरे। मैं आपको व्यूज़ दिखाऊं, लाइक 1000 व्यूज़ पे $0.22 मिल रहा होता है। ये देखो 800 व्यू 1.4K 1.8K 1K, तो कह लो कि 0.22 ऐसे डॉलर्स आ रहे हैं। मार के $1 भी इसमें शायद $1 मिला हो, शायद वो भी ना मिला हो। मैक्सिमम 3-4 ये इसमें $1 मिला होगा शायद। 3.4K या 5K के करीब जाके $1 मिलता है। भाई किस चैनल पे लाइव है रमदान कप? रुको इससे ना अपने लाइव का लिंक देते हैं। बस आप लोगों को अभी मैं ना कमेंट नहीं रीड आउट कर रहा, करते हैं सब्र करो। ये चीज़ है, मैच स्टार्ट हो गया। ओके 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 समझ लग गई है। अलरेडी एक्जिस्टिङ देखिए थे। हाँ आइसकेका छन् उनी पनि प्युरियाका प्लेयर एन्ड सर्कल सर्कल अगेन से भाई सेम सर्कल। रुको अब आप लोगों के कमेंट्स रीड आउट करता हूँ। अच्छा कहाँ पे था मैं? अच्छा यार बहुत कम दे रहे हैं। अच्छा मतलब स्ट्रीमिंग अनस्क्रोच वाले। अच्छा जब आई एम वेयर आर यू फ्रॉम मैम 30% आई एम नोट। हाँ ऑलमोस्ट 30%, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन रेडियो कितना कमा लेता है। रेडियो भाई के कितने व्यूज़ आ रहे हैं यार। रेडियो लोगों को ना मैं बताता हूँ, रेडियो लोगों को ना यूट्यूब से ज़्यादा उनको ना PUBG वाले दे देते हैं। हर पर मंथ उनको पेमेंट सैलरी आती है नेक्स्ट प्रोग्राम से, उनको स्पॉन्सर मिल जाते हैं, उनको सुपर चैट्स मिल जाती है। ये जो यूट्यूब है उनका ये कह लो कि 3rd से 4th वाला जो पार्ट इनकम का है ना वो होता है। फर्स्ट वाला पार्ट उनका स्पॉन्सरशिप होता है, सेकंड वाला उनका यूट्यूब और PUBG के नेक्स्ट प्रोग्राम से जो पैसे वगैरह मिलते हैं, 3rd उनका सुपर चैट्स होती है, 4th जाके उनका यूट्यूब रेवेन्यू होता है। ये चीज़ें होती हैं उनके, तो बहुत ज़्यादा हो जाते होंगे। स्क्रोच वाले मैं नहीं देखता स्क्रोच वाले। अच्छा ओ भाई PMSL में ही किया सिर्फ, और फाइनल में क्या हुआ उनको? भाई कोई और गेम भी ट्राई करो जो न्यू आई हो। यार मैं वो वैलोरेंट खेलता हूँ। आबाद चौधरी FM रेडियो। हाँ जी आप आएगी फॉलो को क्रिप्टो की लाइव की फनी मोमेंट की वीडियो भी बना लिया करो। यार दरअसल ना इतना टाइम मैनेज नहीं होता कि मैं अब दे सकूँ। भाई मैं स्टार्ट होगा जी 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 ड्रामा शो अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। यार इतनी मिनट इतना कम पैसा है, इसका मतलब सुपर चैट से ही गुजारा हूँ। नहीं यार मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग के 3-4 साल मुश्किल है आबाद चौधरी, लेकिन ना जब आपके अच्छे खासे व्यू लाइक कह लो कि जब आपके 10K सब्सक्राइबर से प्लस हो जाता है ना सारी चीज़ें, जब प्लस हो जाता है ना 20 ये इनसे 10K प्लस सब्सक्राइबर, फिर आपके अच्छे खासे व्यूज़ आना शुरू है। फिर तकरीबन 10K 8K पर वीडियो आना शुरू हो जाते हैं, तो मिस कह लो कि 400 से 500K व्यूज़ आपके मंथली बन जाते हैं। तो कह लो कि आपके तकरीबन बिना इजीली $85-95 बन जाते हैं स्टार्टिंग में।
हाम्रो लागि पनि सिचुएसन ब्लेड की कौन सी न्यू टीम? ब्लेड की अभी फिलहाल कोई न्यू टीम में वैसे कई डेडर्स ज्वाइन कर रहे हैं। इतना कंसिस्टेंट होने का क्या फ़ायदा यार? कंसिस्टेंट हो इतना कंसिस्टेंट होने का क्या फ़ायदा यार? कंसिस्टेंट हो गए तो आप लोगों का यूट्यूब थोड़ा सा ग्रो अप होगा। अगर कंसिस्टेंट नहीं हो गए तो थोड़ा सा यूट्यूब बहुत डाउन हो जाएगा। अब लाइक ये देखो ना, अभी जो मेरी मेहनत है ना उसका फल मुझे मिलेगा PMWC में, PMGC में। लाइक देखो अभी मैं वॉच पार्टी कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस बढ़ रही है। जब मेन ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में स्ट्रीम करूँगा उसमें मेरे पास ज़्यादा ऑडियंस कैचअप होगी। दैट्स वाई रेडियो चैलेंज मिलते हैं छोड़। हाँ हाँ भाई आपकी रैंक पुश स्टार्ट कर। अरे रैंक पुश नहीं। अस्सलाम वालेकुम यार ऑफिशियल, अल्लाह पाक आपको काम है। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह आमीन। सबको कामयाब करे यार अल्लाह पाक। होरा वेज हो रहा 37 और 37 यार। होरा को चाहिए यार 2 चिकन मारे बैक टू बैक यार। पिछला मैच अगर वो फाइट निकाल जाते ना मजा आ जाता। इनफ्याक्ट नकै निकालिन्थ्यो भने पनि त्यो सेक्युर गर्नको लागि त्यति सहज बन्थ्यो टिमलाई जस्तो मलाई लाग्दैन। स्नाइपरको साथमा देखिदैछन् भाई जल्दी से लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो। 66 लाइक्स हुए यार भाई। बस्न पनि खासै इन्ट्रेस्ट देखाएन टिमले। गाडी लिएर त्यो एरियाको अप्रोचमा केही चेन्जेस भने चाहिँ ल्याइसकिएको छ। फ्युरिया कति टाइमसम्म कति टिमलाई हेरेर बस्ने हो। फ्यूरिया गेंद भाई ऊपर आ चुके हैं लूट करके। पक्किरहेको छ अर्को एंगलमा फेरि नोट गरियो ग्रेट वर्ड देखाउँदै प्लेयरहरुको एन्ट्रीको बारेमा। बट त्यो हिललाई धेरै बेर समाएर बस्न उनीहरु चाहेनन्। अहिलेलाई बिना फिर बिल्कुल। क्या ये लीड कम कर सकती है यार? लीड कम कर सकती है लेकिन यार लास्ट डे आज कुछ नहीं हो सकता। टाइसन भाई इतने एड्स क्यों डाले? जब भी स्ट्रीम ऑन करें 2 एड्स आते हैं। हाँ यार डबल एड्स अग्रेसिव है ना, तो एड्स डालूंगा तो रेवेन्यू बनेगा ना यार। मुझे कौन सा कोई सुपर चैट्स मार रहा है मैं एड्स ना डालूं? एड्स तो भाई मेरे पैसे वैसे भी मैचेस के दौरान एड्स आते हैं, वैसे भी मैचेस के दौरान एड्स आते हैं यार। और क्या करे टाइसन भाई यार? टाइसन के भाई के पास और कोई हल ही नहीं है। इन्भल्भमेन्ट देखाएका त छैनन्। बट 1200 मिटरको डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्ने चुनौती इनिशियल फेजमा नै उनीहरुले। हाँ किसी के आते हैं, किसी के पास नहीं आते। पॉइंट्स चाहिए छाड़ भन्दा छाड़ यो म्याचलाई मेजर बनाउन जरुरी छ। यो म्याचलाई ठुलो पोइन्टर गेम बनाउन जरुरी छ। होता है ना, किसी के पास आ गए किसी के पास नहीं। पॉइंट्स आएन भने त देन एक म्याच चाहिँ कन्टिन्युअरले पनि भेटाइदैन 8 लाई। अनि त्यसपछि बनाओ पैसे। दुईटा म्याच बैक टु बैक राम्रो अनि त्यो पनि मेगा पोइन्टर गेम खेल्नु पर्छ। एन्ड देन मलाई त कता लाग्छ कि बनाओ पैसे। कहाँ पैसे बने तो भाई देख लो। ऐड देखता कौन? थोड़ी सी ऐड होती है स्किप करके बाहर जाते हैं, कोई देखते फिर ना। बनाओ पैसे। टाइसन भाई 10-12 ऐड डाला कर। थोड़ी सी ऐड होती है, स्किप ऐड की ऑप्शन स्किप कर देते हैं सर यार। इधर 10-12 एड्स की वो तो खुद यूट्यूब खुद डालता है। वैसे मेरे पास ऑप्शन होती है इंसर्ट ऐड की। ये देखो मैंने अभी इंसर्ट ऐड किया, ऐड डल गया, लेकिन किसी को ऐड डला होगा किसी को नहीं डला होगा। नहीं बच्ची वाले एड्स मैंने ऑफ किए हुए हैं, सारे ऑफ किए हुए हैं। जितने भी 18+ और जितने भी न्यूडिटी सेक्शन से रिलेटेड जितने भी एड्स हैं ना सारे रिमूव किए हुए हैं। स्किन आइटम से रिलेटेड मैंने रिमूव किए हुए हैं। लेडीज़ की जो गारमेंट्स वगैरह से रिलेटेड, क्रीम से रिलेटेड सारे एड्स रिमूव है। अच्छे एड्स ज़्यादातर होते हैं। सॉन्ग्स म्यूजिक ये भी सारे ऑफ किए हुए हैं। भाई ब्रॉडकास्टर एड्स की सेटिंग करता। भाई ब्रॉडकास्टर क्राफ्ट भाई ब्रॉडकास्टर एड्स की सेटिंग करता। हाँ ऑप्शन होती है। अब भी स्पोर्ट गाय पीके सोमरो 3-4 लोगों ने 3-4 महीने कंसिस्टेंट रहे, उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाना छोड़ दिया। हाँ कम हो गए यार। उनके पास सब्सक्राइबर्स के बाद ऑडियंस है वो तकरीबन 3-4 उम्रों के बाद 2 चैनल्स है। वो एक चैनल पे ना भी थोड़ी वीडियो अपलोड करो, दूसरे चैनल पे उससे इतना मिल जाता है उसे नहीं जरूरत होती। हमारी तो मजबूरी होती है। ऊपर तो वो तकरीबन 1 वीक के बाद भी वीडियो अपलोड करें ना, उसके तकरीबन 11K से माशाल्लाह से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो एक वीक के बाद अपलोड करें ना उसे उतने व्यूज मिल जाए जितने मैंने पूरे वीक में लिए उन्हें। तो ये रीज़न होता है। ऑन कर भाई मज़े के होते हैं। नहीं भाई मज़े की बात नहीं है, गुनाह होता है। वाह न्यूडिटी के बारे अगर ऑन करोगे तो ये पूरा देखें। अल्लाह माफी। नहीं भाई ये इस्लाम में चीज़ें बहुत ज़्यादा सख्ती से मना है, तो
हमने भी अपनी जो इनकम है उसे हलाल करना है, आराम के चक्करों में नहीं पड़ना, क्योंकि हमें पैसे इनके नहीं मिल रहे जो मैं देख रहा हूँ, हमें पैसे वो मिलेंगे जो आपकी एड्स चल रही है। अभी आपको अच्छा लगेगा कि आप नाचने वाली की नाच रहा है कोई, उसके पैसे आप घर ला के दो, तो ये तो गलत बात है ना। यार ये लाइक न्यूडिटी इसमें क्या चीज़ कोई वो तो नहीं है, लाइक इस्लाम में शरीयत में वो इस्लाम में शर्म वो नहीं है इन चीज़ों में, लाइक इन चीज़ों में ना शरीयत में किसी किस्म की शर्म नहीं है, तो खुल के बात करनी है। बिलाल चौधरी मैं ये कह रहा हूँ कि बैटरी डिसाइड करता है कि आपको कौन सी ऐड देनी है, ये सीसी पे नहीं होता। हाँ डिफरेंस होती हैं, लेकिन मैंने ना एड्स को ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि इस टाइप की एड्स बस देखी जाए, दूसरी टाइप की ऐड आए ही ना, अलाउ ही ना करे मेरी वीडियो या लाइव स्ट्रीम्स। और ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मैच खत्म होता है मैं आपको, हाँ भाई रमज़ान में शरीफ बन जाता हूँ, कूल लगूंगा। नहीं भाई मैंने ऑफ ही किया हुआ है ये, जब मैंने ये मोनेटाइजेशन था ना मेरे चैनल, दूसरा चैनल भी था ना मेरा, उसको भी मैंने ऐसे किया। वो ना गूगल एडसेंस में सेटिंग्स होती है कि आपने किस टाइप्स की एड्स दिखानी, किस टाइप की नहीं दिखानी, तो मैंने वो बाकी सब ऑफ की हुई हैं। कंफर्म है मैच के बाद आपको दिखाता हूँ एड्स का क्या होता है, और एड्स जरूरी नहीं जब मैं इंसर्ट करूँ तब भी ऐड लगे, कभी कभी तो ऐड आती भी नहीं है। अगर सबको ऐड आती है और फिर तो भाई मैं डॉलर पे डॉलर बने। छिटो भन्दा छिटो रिप्लेस गरौँ भन्ने खालको गेम प्ले र त्यो पोइन्ट्सको साथमा आउन चाहन्छन्। Pmpl आरसीबी जसको पोजिसन वाइजमा एकै पोजिसनको अन्तर रहेको छ, दुईटा टिमलाई हामी क्लोज इनफ देखिराखेका छौँ भने यता आरओडब्ल्यू का प्लेयरहरू पनि खासै हलचल देखाउन चाहँदैनन्। मुभिङ भेहिकल देखिएको थियो, शट दिएको थियो, बट उनीहरू अझै पनि कन्ट्रोलमा रहेका छन्, सँगै खेल्ने प्रयास पनि रहेको छ। रिवाज अलिकति छुट्टै छन् कि बाँकी एजीजी V2 का सोलो प्लेयरलाई हामी यही नै देख्न सकिन्छ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फेरि बटममा आउने अवस्था देख्दैछु म त्यहाँ। एफयूटीले 3 पॉइंट निकाल्यो, बेस पॉइंट बराबर भइहाल्यो, तर स्क्वाड बाँकी छ अपोनेन्टको। ओके टाइसन भाई ऐसी ही बात है। यता भ्याम्पायरको टिमले आफ्नो क्वालिफिकेसन समीकरण सल्भ गरिसकेका छ, छैन अब प्रब्लम, क्वालिफाई भयो हामी भनेर उनीहरूले सोच्न सक्छ, आफैलाई दिलासा दिलाउन सक्छ। शिफ्ट हेरौँ, हार्ड शिफ्ट आउने छ। अब म त थोरै यो ओपन फिल्ड सर्कल इमेजिन गरिरहेको छु। ओपन फिल्ड त पर्यो, तर त्यो भन्दा पनि ब्रिज साइडमा धकेलियो अझै फर्दर मोर। बडा इन्टेन्स म्याचको लागि हामी रेडी छौँ भन्दा हुन्छ। और मेबी यू कैन से कि हो रहा कुछ कर क्यों फाल्कन का कंपटीशन ही नहीं है इधर। एनजीएस का क्या बना, एनजीएस कुछ नहीं, एनजीएस का बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। मेरी टीम कम बैक कर रही है 24 मशीनको होल स्क्वाड धुआं भइसक्यो। लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ, एक एमो, एक ड्यामेज, एक गोली कतैबाट अनि फिनिश हुनेछन्। एचपी त अलरेडी कम भइसक्यो, सायद रेन्जबाट पनि स्पटेड छन्। मिली सेकेन्डमा नै टिम गायब भयो, एउटै गाडीमा होल स्क्वाड थियो केही टाइम अगाडिपट्टि, अब छैन उनीहरू। मैले भनेको थिएँ जानी यार ये ना जो जोन रहने वाला ना, निस्कियो चारैजना जोन लबीबाट बाहिरिएको छ एफयूटी को टिम। यता फायर फ्लक्स उनीहरूले एउटा प्लेयरको क्याजुअल्टी फेस गरेको, फनेटिक स्प्लिट वाले एरिया पे खत्म होगा जोन। अगाडिपट्टि फ्रेममा देखियो शट दिनको लागि M16 को साथमा प्रयास गरिएको थियो, फेरि ड्यामेज पनि आए झै मलाई लाग्दै थियो त्यहाँ। होरा का चिकन आ जाएगा, ओए होरा आ गया, होरा को अब होल्ड करना पड़ेगा। ये क्या था भाई, क्या कह रहा है कोको? जहाँ उनीहरू छन् त्यहाँ यदि दुई साइडबाट प्रेसन गरिएर ट्रेबल पुरै मैं जोन देख रहा था ना, मैंने लाइव स्ट्रीम थोड़ी पीछे करके ना जोन देख रहा था। टिम वर्सेस फाल्कनको बीचको यो ब्याटल चल्ने छ। इनको का प्लेयरलाई डाउन निकालिदैछ, इनको को लागि अन्तिम प्लेयर बचेका छन्। 7 उनी बच्ने प्रयासमा ट्रेबलको युज देखाउन खोजे, कसैले पनि माथि चढेर प्रेसनको लागि डिसिजन लिएका छैनन्। फाल्कनले क्याजुअल्टी फेस गरिसकेको त छैन, प्लेयरले जम्प गरेर बाहिर निस्केको आवाज सायद सुनिसकिएको छ। के गर्दै जानु भन्दा दुईटा प्लेयरले दुई साइडतिरबाट प्रेसन गर्नु, नाइस ऑन एक्शन यार। टीम फाल्कन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आइसकेको छ। पहिलो दिनमा पनि प्लेयर अफ द कुछ भी मुश्किल नहीं है। उनलाई नै देख्न पाएका थियौं, आजको दिनमा पनि सायद त्यही खालको गेम प्लेमा उनकी सिनर्जी इस लेवल की बनी हुई है ना,
फाल्कनको टिम धेरै अगाडिको रेस छ उनीहरूको लागि धेरै अगाडिसम्म गएर त्यो डिफरेन्स क्रिएट गर्न सकिन्छ उता सोलेसलाई झाउ निकालिएको छ फायरफ्लक्स फेरि अर्को प्लेयरको क्याजुअल्टी फेस गर्दै हो र उनीहरू डीडब्ल्यू का प्लेयर पेट्रोल पम्प एरियाको अप्रोचको साथमा Vampire versus Fireflex. उनीहरूको लागि स्पिड फर्मेसन चलिराखेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ भने होरा स्पोर्ट्स बाहिर निस्किनु पर्यो भने उसने गाड़ी ठोक दी, 4 बंदे थे उसमें। पर्दाखेरि कति जेल होल्ड गर्ने त त्यो एउटा ठुलो क्वेशन मार्क फाल्का में एक्शन की जगह कौन सा प्लेयर है? एक्शन की जगह एक्शन ही है। फायरफ्लक्सको अगेन्स्टमा पनि सर्ट दिँदै थिए मेबी यो लोअर पोर्सनमा वेयरहाउसमा पनि उनीहरूले आँखा लगाएको हुन पाइयो भने ओके। होरा स्पोर्ट्स कतिको कन्जस्टेड थियो र त्यो भन्दा बढी कन्जस्टेड त उडन स्याकमा 3टा प्लेयर लिएर टिमको यसोका प्लेयरहरू पनि हामी त्यहाँ नोटिस गर्न भने चाहिँ पायौं सर्कल सेफ्टिङ आउने आय हाय फैनेटिक का जोन आ गया, जैसे मैंने आपको बताया फैनेटिक वाली साइड पे। यार वो ड्राइवर ही उतर गया था ना, क्या नाम है तेरा कोको, वो ड्राइवर ही उतर गया था। थोरै निस्किन भने चाहिँ झ्याउ हुन सक्छ टिमको लागि एनजेड वर्सेस निगमा गैलेक्सी। टाइमिङको लागि गएका छन् अगाडि देखिएको स्पट गरिएको प्लेयरलाई नाभिगेसन नाइस। ओए एनजीएक्स भी रख देगी निगमा गैलेक्सीको अगेन्स्टमा रफलाई झ्याउ त निकालियो अर्को प्लेयरलाई इंशाल्लाह निकाल्न सक्ने चान्सेस त्यहाँ रहेको थियो भाई। टीम फाल्कन ने भाई प्रीलिम्स से क्वालिफायर से पैसे लिए $2000, अब प्रीलिम्स आई थिंक $5000 लेने हैं, देन उन्हें मेन स्टेज के डॉलर लेने हैं भाई। सही अच्छा खासा पैसा छाप रही है। एसटी में अभी फिलहाल कोई प्लेयर नहीं आया ब्रो, अभी तक एसटी फारग है, लाइक कोई भी खाली एम्प्टी है एसटी। जो एसटी के सारे प्लेयर्स थे ना वो टीम फाल्कन में चले गए हैं भाई। 100 लाइक्स हुए कि नहीं हुए यार जल्दी बताओ। 69 लाइक्स हुए अभी भाई। वैसे ही बड़ी बात है, 20 के करीब वाचिंग आ रही। लाइक पाकिस्तान टीम के बावजूद, पाकिस्तानी टीम नहीं है फिर भी 20 वॉचिंग आ रही है माशाल्लाह से। पैसे तो फाल्कन्स ले रही है, पैसे तो फाल्कन नहीं लाइक प्लेयर्स को भी मिलेंगे, स्पॉन्सर को भी मिलेंगे। लाइक अगर स्पॉन्सर ने पैसा लगाया है तो स्पॉन्सर चाहता है, अगर स्पॉन्सर पैसा लगाया है तो लाइक स्पॉन्सर का हक बनता है उससे पैसे वापस मिले। यार पता नहीं क्या हुआ है थोड़ा सा यहाँ। फाल्कनको टिमलाई हामी यहाँ देख्न सकिन्छ टिम एनजीएक्स यार ग्लोबल ये निर्जेट शट दिनतिर त उनीहरू लाग्दै छन् उतातिर हेरिन्छ भने गाडी एसटी वाले अब डिफने नहीं, उसके अलावा भी हर किस्म के उन्होंने लाइक मोबाइल लेजेंड्स, फ्री फायर, ये डिफरेंट उन्होंने टीम्स बनाई हुई है। हामी चौथो स्टेजमा भइसक्दाखेरि थोरै ओपन फिल्डको यो ब्याटल बनिराखेको छ। टिमहरूलाई थोरै ओपनमा आएर सुत्नुपर्ने बाध्यता भने चाहिँ यहाँ बाह्र हुन सक्छ। लेट्स सी को समय अवधि रहेको छ जुन स्विङ्गिङ पुरै कम्प्लिट हुनको लागि निगमा ग्यालेक्सीको टिम अलिकति हायर ग्राउन्डको एडभान्टेज दिन त खोज्दैछन् बट उनीहरूभन्दा माथि नाभीको टिम पनि रहेको थियो देख्न सकिन्छ। यता नाभीको टिमको तर्फबाट एङ्गल बनिराखेको छ, लोअर पोर्सनमा सर्ट दिन सकिन्छ, केही गर्न सकिन्छ भनेर भिजन बनाउन त खोजिँदैछ बट अझै पनि त्यहाँ चान्सेस भने चाहिँ देखिएको छैन टीमलाई। ओए गाड़ी से दे दिया नीचे ब्रो। आज सारे कम्पिटिटिव प्लेयर के चैनल होते हैं तो कंटेंट पर अच्छे व्यू मिलते हैं। इंडिया में अंडरडॉग के भी 30 के जहाँ हमारे सारे प्लेयर आईक्यू के अभी तक 20 के भी नहीं। हाँ ये बात है, जैसे डिस्ट्रीम मैंडेवर। हाँ यही तो बात है ना। लाइक मैं आई8 और स्टार के अलावा किसकी न्यूज़ दूं? 141 की थोड़ी सी अब देना स्टार्ट किया, लेकिन उस पर उस टाइप का अंडरडॉग्स चाहते हैं हमारी न्यूज़, तो अंडरडॉग्स की न्यूज़ कैसे दूं जब तक उनको कोई जानता ही नहीं होगा, तो किसने देखनी है उनकी न्यूज़? ऑनर किंग्स कोई गेम है? जी ऑनर गोइंग मोबा गेम्स है, मैं खुद खेलता रहता था। आईसी प्यारा बच्चा है, मैंने नहीं देखी, मैं देखता हूँ। ओके भन्ना साथ बग्गी लिएर प्लेयर अगाडि गएका थिए, स्ट्याकको साइडमा नै जाँदै थिए बट त्यहाँ एकजना प्लेयर डाउन भए, कोही त गएको छन् त्यहाँ सपोर्ट प्रोभाइड गर्न, द्याट मिन्स रिभाइभलको लागि। रिभाइभल पोसिबल हुने भयो बट त्यो बग्गी जाने भयो।
हाँ PUBG ल्यान्ड अनाउन्समेन्ट छ ग्यालेक्सीको लागि पो राम्रो ठाउँ बनेको रहेछ पॉइंट्स आउँछ जस्तो छ निगमा ग्यालेक्सीको त यहाँ Lol admin you got scammed by 4 AM नजिकै भ्याम्पायर आएको छ बोथ द टिम जोन भन्दा बाहिर आरसीबीले मजाको ग्रिप पाएको थियो सर्कलको होल्ड पाएको थियो would have been so nice having Doc in the red jersey no ओके एउटा प्लेयर अगाडिपट्टि स्याकमा गएको छन् बट स्याकबाट जोन बाहिर गयो भने सक्यो त्यो प्लेयरको कहानी बाँकी प्लेयर जोनमा अहिलेसम्म पुगिसकेका नै छैनन् यता फाल्कनको टिम सर्कल प्रायोरिटाइज टोटली गरिसकेका छैन हुन त कपाल अफ प्लेयरहरु तो 500 यहीं से ले लेकिन अनफॉलो कर गाह्रो छ यो साइडबाट सर्कल एन्ट्री किनभने अलरेडी 3-4 इभन फर्दर मोर टीम छ बिकज फाल्कनले पनि रेन्जबाट आँखा लगाउँदैछ भन्दै नक निकाले फाल्कनका एक्सनले एउटा एलपी टिमको लागि फेरि थपिने भयो यार द ऑफिशियल आपकी ऑडियंस क्लासिक की है हमारे कम्युनिटी की शॉप से यहाँ सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा हाँ ये बात है नेड भी है ये मोबा क्या होता है मोबाइल सुनाता ये मोबा गेम्स वो होता है जिसमें 5 प्लेयर्स होते हैं 5 प्लेयर्स वाली गेम को मोबा गेम्स कहते हैं यार हो रहा नॉकडाउन फिनिश क्या यार होरा स्पोर्ट्स वन मैन शॉट को साथमा अगाडि बढेका छन् जुनको एन्ट्रीको ठाउँ कहीं पाउने हुन् र फाल्कनको अगेन्स्ट स्लाइम होरा भी गई गर्दैछन् स्काई गर पछि दो नॉक शुक्र होरा स्पोर्ट्सको लागि क्विक रिकभरीको फेज चल्नै छ 1 मिनेट 15 सेकेन्डको अवधि भित्रमा त्यो क्लोज इन भइसक्दाखेरि उठाउन त सकिन्छ बट उठाएर जाने कहाँ त तपाई कम्प्लिटली पिन डाउन हुनुहुन्छ तपाईलाई थ्रु द स्मोक शॉट्स आउँदैछ गाडी यार क्या कर रहे हो ओपन से भाई मैं पता भी लग गया बंदे फिर ओपन से भाई बग्गी घुमा के लेके आ रहा इंडिया लाइनअप हो सकता है स्ट्रीम में हाँ हो भी सकता है दुईटा प्लेयर सर्वाइभिङमा त छन् बट दुईटा प्लेयरले पनि खासै केही गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन फाल्कनले पुरै पिन डाउन नै गर्ने भयो उनीहरुलाई यता डीडब्ल्यू को टिम भर्सेस नाभीको बीचको प्लेयरको ब्याटल चलिराखेको छ नाभीको प्लेयरलाई फिनिश पनि गरिने भयो यो डीडब्ल्यू को टिमको लागि पनि लास्ट प्लेयर सर्वाइभिङ रहेछन् लास्ट प्लेयरले केही इम्प्याक्ट पार्न सक्छन् त नाभीको प्लेयरको सिचुएसनलाई यदि बुझिन्छ भने उनीहरुसँग त नम्बर यार फिर हो रहा भएको ठाउँमा पोसिबल गर्न खोजिदैछ स्काई गन बी टेकन डाउन मलिक अन्तिम प्लेयरको रूपमा रहेका छन् उता एनजीएक्स का कुक्सले शॉट दिँदाखेरि फाल्कनले पनि टपलाई भनेपछि लुज गर्ने वर्जमा पुगेको याद आ फिर नब यहाँ इंडिया में एसटी के लिए कोई जगह नहीं सायद होरा स्पोर्ट्सले फेरि पनि मौका बनाउन सक्छ कि हां बीजीएम में ये पबजी बोर्ड यालो टीम हो रहा भी डेड होरा का प्लेयर स्काई लाइफ फिनिश नै गरियो अब अन्तिम प्लेयरमा कन्भर्ट भएका छन् अन्तिम प्लेयर का एक नॉक किया मलिकले एक्सन लाइक ठाउँ त निकाले एसपी कम भयो मलिक गया यार बट मैन हो रहा 4 मैन स्टैंडिंग लास्ट जोन साथमा होरा स्पोर्ट्सको लागि 2 पोइन्ट्समा अर्को एउटा र्याङ्कलको कहानी यहाँ नै पूर्ण विराम लाग्ने छ नाइस 38 पॉइंट्स मात्रै भयो अब त दुई म्याचमा कम से कम पनि टप 3 गेम चाहिने छ एनजेस अच्छा खेल रही है त्यस्तै फिल हुँदैछ त कसैले एक्सपेक्ट नगरेको म्याचमा 15 पोइन्टर निकालेर टुर्नामेन्ट सुरुवात गरेको त्यही पोजिटिभ लिएर हामी जप्दै छौं कि आउँछ गर्छन् आउँछ ऐसी इंडिया की किसी टीम को स्पॉन्सर ना कर दे यार स्पॉन्सर पबजी रोस्टर लाएंगे बीजीएम में रोस्टर उनके पास ऑलरेडी शायद है अब स्याक होल्ड गरेर बस्ने टिमहरु त्यहाँ सकुशल छन् बाकी टिमको लागि गाह्रो परेको छ बट जो स्याकमा छ उसको फ्रीडम छैन मुभमेन्ट छैन टाउको देखाउन मिल्दैन हेर्न मिल्दैन को कहाँ छ केही पत्ता लगाउन मिल्दैन जतिन्जेल जोन छ त्यतिन्जेल टिम खोजी जोन सर्छ देन तपाईको गेम पनि सायद अलमोस्ट त्यहाँ सकिनेछ कसैले स्ल्याम गर्ला र त्यो स्याकमा पनि बिकज त्यो स्याकमा पुगुन्जेल 4 जनाको अरु शट त्यहाँ पुगेपछि हेड टु हेड बाइट एउटा त्यसपछि फेरि त्यहाँ केही गरिकन मैच नंबर 4 यो के डिसिजन लियो नाभीको टिमले यो नेपाली मोड वेयर आर यू नेपाली मोड अभी नहीं है ना सुभाष है ना वो दूसरा है 2 नेपाली मोड है मेरे पास एक 360 लिपिड का है और एक सुभाष है 100 लाइक्स कर दो यार बॉयज गाडी अनि स्याकको कभरमा उता फाल्कनबाट लास्ट रिमेनिङ प्लेयर एसटी की ओनर इंडिया से बेटा एसटी का ओनर इंडिया से बेटा नहीं इंडिया से नहीं पाकिस्तानी है टुर्नामेन्ट सुरु हुँदा पहिलो टिम त्यो अलमोस्ट लबीबाट बाहिर निस्किने बट लुक एट द डिफरेन्स जुन त्यो टिमले विथ द एक्सपीरियन्स एन्ड विथ द गेम प्ले लिएर एसटी की और इंडियन है ऑनलाइन क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत कम है यार अब बहुत कम हो गए हैं बट आरसीबी की टीम सही खेल्दै छ
आरसीबी को टिमको बहुत तर्फबाट कम फेरि अर्को एउटा मेहनतवाला गेम यहाँ देखिरहेछ जसले गर्दाखेरि उनीहरूको अगाडिको यात्रामा कन्फर्मेसन भनेपछि पाउँदैछ टिमले भनेर यतिकै बुझ्न पनि हामी सक्नेछौँ। त्यो बिचमा नक द प्लेयरले फेस गरेका छन्, क्विक रिकभरी पनि हुन पाए। ओपन फेजको यो बहुत कम है, 2 मैचेस में बहुत मुश्किल है यार। साथै स्टेजको सर्कलले पनि फेरि ओपनमै बोलाउने सानो सानो कभर वाचिंग माशाल्लाह कितनी वाचिंग आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह 36 की वाचिंग माशाल्लाह। भाई लाइक कर दो यार, 100 लाइक्स कंप्लीट कर दो। क्या बात है यार, क्या ही बात है यार, आप लोगों की क्या ही बात है। थैंक यू सो मच जो भी आ रहा है स्ट्रीम पर। मजा आना है अब मुझे PMSL CSA की वाच पार्टी करने की यार है, दिल को सुकून सा मिलना है कि भाई मेरे पास अपनी ऑडियंस है, चिल्लो होके भाई देखनी है सबने मिलके। एसटी की शर्ट देखना मंगोलिया के साथ इंडिया फ्लैग भी लगा था। हाँ लाइक वो है, लेकिन वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो बंदा जो जियान है ना वो पाकिस्तानी है और मुसलमान है, सॉरी पाकिस्तानी कह रहा हूँ। जियान शफीक नाम है इसका, वो मुसलमान है। अलिकति अगाडि सर्न बाध्य बनाउनेछ त यो सर्कलले। देउवीको टिक्यूको टिमको यसो 24 में टॉप 8 ने क्वालिफाई करना है। टिमलाई थोरै भए पनि छलफल दिन बाध्य बनायो, थोरै डिस्टेन्स भए पनि कभर गर्नु। एसटी अगर इंडिया से होती तो वो I8 को स्पॉन्सर करती। अप्सन के छ त अगाडि रहेको स्याकलाई स्ल्यामिङ गर्ने मेबी त्यही एउटा बेटर एनजे टॉप 8 गोल्ड लाइक ने भी तो एसटी को स्पॉन्सर किया था, एसटी ने गोल्ड लाइक को स्पॉन्सर किया था। गाडी छ अगाडिको त्यो हेस्टैगसम्म जान कोसिस गर्यो भने त्यसले पनि हेल्प त गर्न सक्छ। त्यो बीचमा आरसीबी का लागि फेरि नक निकाल्दै टिमको यसो कश्मीरी है, यो ब्याटलमा टिमको यसोको प्लेयरको पोजिसनको बारेमा आइडिया रहेको छ। लर्ड लाइक हाँ वही यार मुसलमान है ना। चाटमा डाउन निकाल्न सकिन्छ कि प्री फायर काइन्ड अफ रहेको थियो जसले ड्यामेज दिएन। जी यार लास्ट 2 मैचेस रह गए हैं बॉय। ये टोक्यो ब्रो, लास्ट 2 मैचेस रह गए हैं। CSA की एक्सपेंसिव पबजी देगी जी जी, CSA की एक्सपेंसिव पबजी देगी ब्रो। निगमा ग्यालेक्सीले पनि प्रेसिङ गर्ने र उताबाट आरसीबीले पनि प्रेस गर्दाखेरि टिमको यसोको लागि स्यान्डविच सिचुएसनमा उनके होटल्स, उनकी ट्रैवल एक्सपेंसिव, उनके डिवाइसेस एक्सपेंसिव, सारा कुछ पबजी देगी भाई। लास्ट 2 मैचेस हैं यार, फाइनल्स का ही बड़ा मजा आना है, इसके फाइनल्स का भी मजा आना है, इसके फाइनल्स का बहुत ज़्यादा मजा आना है भाई। वे NGX का कमबैक हो रहा है बॉयज। कौन कह रहा है NGX का, फिर तो बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है। फाइनल्स में S2G होनी है, अल्फा 7 होनी है, नोवा होनी है, ISC होनी है, फाल्कन होनी है। ओए होए नहीं गोल्ड लाइन नहीं किया था। ओके मुझे आइडिया नहीं इसका। CSA कब है? CSA ऑलमोस्ट मई के फर्स्ट वीक में यार। ये 7 अप्रैल को ना PMGO एंड हो जाना, उसके बाद आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी CSA की। वैसे मैं आपको बता देता हूँ होटल्स और टिकट्स वगैरह ऑलमोस्ट उनके प्रोसेस हो रहे हैं, जो वेन्यू वगैरह भी डिसाइड फाइनल हो चुका है, बस अनाउंसमेंट करनी है और स्टार्ट तैयारी तो कहीं मई के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। वेलकम टू द स्ट्रीम ब्लेट, वेलकम यार। I8 के बूट कैम्प रिलेटेड फिलहाल के लिए कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन इतना पता है कि फाइनलाइज बूट कैम्प बन रहा है, उसके सारा कुछ हो रहा है। लाइक मैं ना खुद नहीं इस चीज़ में ना अभी पढ़ रहा। लाइक वैसे मैं पूछ समझ भाई को डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकता हूँ, लेकिन ना होता है ना एक अच्छा नहीं लगता। एक हो ना कि लीक पता लगे, एक होती है लीक पता लगे कि लाइक किसी न्यूज़ टेलर ने ना एक दूसरे के साथ डिस्कस किया, उसका मज़ा आता है। एक होती है कि भाई खुद बंदा किसी उस ओनर से, ऑर्गेनाइजेशन से खुद या प्लेयर से पूछे, तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं ना पूछूँ। इंशाल्लाह रोज़े गुजर जाने दो, ईद गुजर जाने दो, फिर जाके पूछेंगे, तब तक अगर अनाउंसमेंट नहीं होती तो। क्योंकि सीधी सी बात है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। तो भाई बड़ी चीज़ें टाइम लेती हैं, तो बी पेशेंस। I8 के बूट कैम्प रिलेटेड मैं बोल रहा था ना NGX का। हाँ अब्दुल हनान ब्रो, ओके। नहीं नॉर्मल चिकन है किस, देखो यार 6 किल्स है ना, लाइक कह लो कि 6 किल्स हैं, 10-16 पॉइंट है, फिर भी थोड़ा सा बूस्टअप तो मिलेगा ना। कोको फ्रैंक ने बोला था, ओके। और जैसे में आईफोन है होगा या नहीं आईफोन तो नहीं, रियलमी का डिवाइस है उसके अंदर, रियलमी का डिवाइस है, एंड्रॉयड है उसमें, आईफोन तो नहीं है। ये भी एंड्रॉयड में खेल रहे हैं ये सारे, ये PMGO भी। मैं जिसकी बुराई करता हूँ स्टिंग का कमबैक जरूर होता है।
हाँ एशियन क्राफ्ट कह रहा था एंजल्स पता नहीं क्या हग रही है यार यदि हिँड्छ भने कमान्ड दिइसकेको छ टिमले उता आरओडब्ल्यूको प्लेयरलाई चाहिँ आउने खालिने छ अब अर्को 4v2 जरुरी देखियो त्यसपछि त इजी चिकन डिनर यहाँ निकमा ओए फ्री को डाउन नाइस वन लड़को आरओडब्ल्यूका प्लेयरले एउटा प्लेयरलाई डाउन गरेका थिए बट फाइनली निगमा गैलेक्सी 21 पॉइंट अच्छे हैं यार 11 की नॉट बैड अनि अगाडिसम्मको यात्राको लागि जुन अझै पनि क्या इंग्लिश बोल रहा ये मैं इंग्लिश के पेपर में लिख दूंगा यो गेमलाई लिएर खासै रियाक्सन त देखिएन टिमलाई थाहा छ एउटा अभी जो 4MV स्कैम वाला सीन जो हुआ था जान ने इंडिया कोर्ट में गया था अच्छा ओके त्यो बुझाइलाई कहीं न कहीं गेममा कन्भर्ट पनि गरेर देखाइदिए जिसकी बुराई करता हूँ क्या इंग्लिश बोल रहा है ये मैं इंग्लिश के पेपर में लिख दूँ ये इंग्लिश नहीं बोल रहा ये तो नेपाली बोल रहा है अब्दुल हनान I8 की भी करो बुरी आई अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ रुको जरा रहेछ भन्ने हामी आफै पनि धेरैचोटि कुरा गरेका थियौं बट यहाँ आइसक्दाखेरि एउटा बेटर स्पट र राम्रो ठाउँ नै क्लेम गरेर ये है पाकिस्तान आई थिंक पाकिस्तान से गई PMSLCS से देखो अभी तक उन्होंने नहीं बताया एग्जैक्ट डेट नहीं बताई टू बी अनाउंस आ रहा है टॉप 4 टीम जाएगी ग्रुप स्टेज के लिए PMWC और 5th प्लेस जाएगी सर्वाइवल स्टेज के लिए यार अभी ये सेंट्रल एशिया क्वालिफायर्स होना है उसके बाद होना है अच्छा 25 और 28 अप्रैल को हो अच्छा बस 25 से 28 अप्रैल को PMSL सेंट्रल एशिया क्वालिफायर्स है लाइक कह लो कि 7 अप्रैल को ये एंड होना है यार रुक जाए इसकी बात बंद करने दो 7 अप्रैल से PMGO एंड हो रहा है उसके बाद आके 25 से लेके 28 अप्रैल 25 26 27 28 25 हाँ 4 दिन का आपका सेंट्रल एशिया क्वालिफायर्स हो गए उसके अंदर जो टॉप 5 टीम्स होंगी ना वो क्वालिफाई होगी CSA के लिए रुको कह लो कि यार मई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा देखो 5 स्लॉट हैं सेंट्रल एशिया क्वालिफायर से देन फिर वहाँ से आप देख सकते हैं टोटल 20 टीम्स हैं लीग स्टेज के अंदर 20 टीम्स होंगी फिर ग्रैंड फाइनल्स के अंदर 16 टीम्स होंगी 3 स्लॉट्स पाकिस्तान की है एक इनवाइटेड रहने वाली है 4 स्लॉट हैं टोटल अच्छा इनका डिवाइस ना वो दूसरा है इधर शो तो नहीं हो रहा लेकिन डिवाइस दूसरा है अभी उन्होंने नहीं बताया हुआ नहीं तो मैं आपको बताता हूँ 2000 प्लस अराउन्डको ड्यामेज भने चाहिँ हामी देखादेख्न सक्छौँ डेथवुल्फ्सलाई पनि 4 एलिमिनेसनमा 1000 प्लस ड्यामेज क्रस गरेको देखियो जी बादशाह मुझे जी शाबाश मुझे कूप्स कैरी करता है एंजेस को नोटिस यार कूप्स नहीं सारे एक प्लेयर अपनी जगह पे कैरी करते हैं अब ये नहीं कह सकते भाई एक ही बंदा पूरी टीम को कैरी करता है जब कूप्स नहीं था या जो भी था तब भी एंजेक्स चलती थी ना तो ये हम ना किसी भी प्लेयर को नहीं कह सकते क्रिप्टो को भी या फलक को या आईक्यू को भी नहीं कह सकते कि वो I8 को कैरी करता है क्योंकि वो प्लेयर का किल्स नकार है उसके ऊपर उसके प्लेयर्स उसके IGL का बहुत बड़ा हाथ है कि वो उस सिचुएशन को बना के दे रहे हैं अपने उस टीममेट को उस जगह खेलने दे रहे हैं लाइक वो कहते हैं कि भैया तू पीछे रह ब्रिज से किल्स आने तो किल्स उठा या तू आउट ऑफ जोन्स के किल उठा ये होती हैं ये बातें I8 की बुराई करो ताकि वो आदम जहाँ का जीत जाए ये चार्जिंग लगा कर खेलते हाँ लाइक यार एक मैच होता है उसके बाद चार्जिंग ये देखो इनके ना पीछे ये सीन बना होता है उसी टाइम चार्जिंग लगा लेते हैं हामिद ब्रो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू ब्रो कैसे हो हामिद ब्रो मैं आता हूँ 2 मिनट में ओके ब्रो I8 को स्पॉन्सर कर दे तो पैसा ही पैसा यार I8 को कितने स्पॉन्सर देने हैं AS ग्रुप ऑफ कंपनीज है गोन है अब क्या करना है यार I8 ने I8 ओके उसकी जरूरत नहीं टोक्यो ने कहा मैसेज किया I8 की बुराई करो ताकि रमजान अच्छा कासिम AS भी किसी से कम नहीं हाँ भाई AS माना जाना वाला यार एक पोर्टर भाई ने जैसे बताया था शॉर्ट के अंदर एक बिजनेसमैन और एक बताओ
बेला पनि आइसकेको छ यार फिर क्यों यार, ये बड़ा मसला, बहुत से लोग कहते हैं आप ना बेल आइकन को ऑफर की ऑन करो, आया है बट किसी और यूट्यूबर की। अच्छा
थैंक यू। भ्याम्पायरको जम्प बनिसक्यो। भ्याम्पायरले डे 1 र डे 2 मा कत्रो टर्न अराउन्ड ल्याइसक्यो, कति धेरै पोइन्ट्स ल्याइसकेको छ उनीहरूले। त्यसले पनि अलिकता भनौँ न टिममा पोजिटिभ भाइब ल्याइरहेको होला। हुन त क्वालिफाई हुँदैन भन्ने भर्समा पनि वो समझ गया होगा फ्रैंक भाई, समझ तो नहीं गया कि अच्छा जी। PMGC की कुरा गर्ने भने लास्ट म्याच आइसक्यो, क्वालिफाई 100 हुँदैन भन्ने देखिसकेको छ, बट स्टिल उनीहरू चिल देखिरहेको थिए। सो अलिकता भनौँ न त्यो प्रेसरलाई सोक गर्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि उनीहरूले बनाइरहेको थियो आफूमा। बट रेगुलर ल्यान्ड पनि खेलिरहेको हुन्छन् एन्ड दे नो यो सब सिचुएसनलाई कसरी डिल गर्नुपर्छ भनेर। बिकज नर्मल अर्गमा त छैनन्, इज अ प्लेयर क्ल्यान बनाऊ क्रू बनाऊ भनेर खेल्न थालेको पनि होइन। टप टियर म्यानेजमेन्टको अन्डरमा पनि आउँछन् उनीहरू, टप टियर फेसिलिटीको साथमा आउँछन् उनीहरू, एन्ड टप टियर मेन्टालिटी त्यो साथमा त हुनु पऱ्यो, किन भन्दा टप टियर ग्लोबल इभेन्टहरू बारम्बार उनीहरू खेलि नै रहेको छन्। एन्ड रिजल्ट सर्टिफाई यार ये इधर नहीं चलनी, ये स्ट्रीम ऑफ करनी पड़नी है मुझे। आई एम प्रिटी श्योर PMWC मा त्यो टिम आउँछ यार उस स्ट्रीम्स में भाई, उस स्ट्रीम पे आ जाओ सारे के सारे। ये स्ट्रीम ऑफ कर रहा हूँ, मुझे याद आया दो चैनल पे डिफरेंट स्ट्रीम नहीं हो सकती एट अ टाइम। ठीक है ना बॉयज, दूसरी स्ट्रीम पे आ जाओ सारे के सारे।